This So conference will now be recorded. okay. So people trade triangles, wedges, flag patterns, and whatnot, but it's just the other words for complex and complicated and basic consolidation phase which happens in any trend market or any market. So we won't be really learning what are triangles, what are wedges, what are flags, because personally I have never seen anybody, or I have not really achieved anything by trading triangles and all. I have experimented on that. So also I will be just promoting the same things which I have learned, and we'll be combining all the simple tools which we are going to apply in our lives. I don't want to overcomplicate our entire chart system and trade system. It's gonna be very simple. You guys will be shocked to see how simple these things are, and then you will realize ki, oh my god, it was my mistake. I searched on YouTube about intraday trading strategies and all these things which everyone goes through. I'm aware everybody might have gone through that. So without wasting any time, just I wanted to tell you about what exactly, which type of price action we are going to follow. All the thousands of books, yes, they do mention triangles and all, but do we really care? We don't, because we will be simplifying price action and we'll be using that. So the price action is just the random chart, like the movement you see on the chart, nothing complicated. It's a dynamic process, to be honest. So moving on, why technical analysis? Just the basic part. Technical analysis widely used by type of analysis by all the successful traders over the globe. Practicing technical analysis and price action can make you predictor of the script, and thus make you a winning trader when you find trades and execute properly. So please concentrate that I have mentioned it's a type of analysis, because I'm sure everybody might be aware of there is second type of analysis also, which is known as fundamental analysis, in which we see the basics of the company profile, how company is performing in in terms of operations, in terms of projects, in terms of who is handling the company, what logic does the promoter or the operator has behind having the operations going on of that company, then what future projects there are, what these operators and promoters are promising to their long-term investors, and then the P ratio, price to earning, the price to book ratio, which is very underrated. Price to book ratio is an amazing fundamental ratio which is not used by most traders. They must. Then industry PE, the liability, and all these things come into the place, and also the news also affect. So all these things are fundamental, but why we are and one is the technical analysis, in which the price itself forms on the chart, because there is lakhs and lakhs and crores of volume which is traded, and this traded, because this things are traded, the price action takes place, and this is how we know that it's technical analysis. So moving on, I hope यहाँ तक सबको पता है, just the basics. ठीक है? So why all indicators suck? So this is one of the things I will just like to take 5 minutes of your time to explain on why we will never ever trade on the basis of indicators. In our initial beginning stages, we all uh, tried to search on YouTube about best technical indicator available, or the indicator strategy, or the combination of indicators. These few terms are the most searched term on YouTube today, and there are millions of views on every video. The videos are also monetized, so all the channels are earning through the ads which pop up when you see the YouTube video. So in short, these technical indicators were purposely created by the institutions. This is my theory, I might be wrong, this is not written anywhere, but I think that indicators were purposely created by the institutes and by the great old traders to mislead the retail investors and traders from simple thing like price action. Okay, like simple thing like price action and market structure will be covering it up later, I guess. The next trading session will be covering up with market structure. But yes, the indicators were purposely created to let people stay away from all these things, all the basic tools, because जब एक किसी का प्रॉफिट होना है तो उसकी उस चीज के लिए किसी और का लॉस होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है. So we won't be using any indicators, no RSI, no MACD, no stochastic, no moving averages.
No, exactly. No moving average is also it's widely used concept, but I don't understand why. If moving averages worked, then why 90% of traders fail? Because all the 90% traders use moving averages in their lives. Okay, so moving averages just work when it just doesn't work. It just indicates when the market is in a trend. So I don't even find any logic behind using moving indicators. But guess what? I use them, and steadily I lost a lot trading EMA crossovers. Like everybody might have traded that way. I'm definite about it. The second thing, yet if you want to, yet somewhere you want a confirmation of any indicators to trade, I will never recommend, but the price action is the only indicator which we are going to use. So zero indicators, the volume also doesn't matter. I have seen a lot of young traders and even intermediate traders who are struggling with profits. They include the volume bar down there. Well, you will never find real volume hidden in the bar. ठीक है द क्योंकि जो बड़ा वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम से पूरा मार्केट घूमता है, वो वॉल्यूम कभी अन हिडन क्या बोलते हैं उसे, इट्स नॉट इट्स ऑलवेज हिडन. ठीक है, वो नेकेड नहीं होता. यू विल नेवर बी एबल टू सी दैट लेवल ऑफ वॉल्यूम ऑन द ऑर्डर बुक ऑफ विच एवर ब्रोकर यू यूज. ठीक है, so volume, we are strictly against these volume indicators of whatever indicators people use, be it Bollinger Bands, be it anything which people use. It's not our concern at all. Okay, I hope this is clear. So yeah, I took exactly 3 minutes to explain that. So moving on. So any doubts regarding indicators, you guys can ask me right away by just unmute and just answer. You guys can do that. No questions regarding regarding indicators. Anybody who is in support of indicators? Any debate we have for the day as an entertainment section? Too little experience, Two. even with indicators. Yeah, very little experience even with indicators. Yeah, so So it I don't sucks, know. right? Yeah, Yeah, it sucks. This is, see, वही तो बोल रहा हूँ. Like I have seen, see, I have mentored few people before. Even I had forex traders also. I won't boast. I'm just saying that I had forex traders also. And it's not the situation in India सिर्फ कि इंडिया में ही सारे जो भी कोर्स वाले होते हैं वो इंडिकेटर्स का स्ट्रेटेजी फेंक देते हैं, वीडियोस भेज देते हैं, and then they are done. Even this thing is happening in 10 times in states and Europe, just selling all these indicators which make no sense and then realize it doesn't just work. Okay, so fine, these things never work. We will always stay away from that because it's so simple, you know. If, to be honest, if any beginner, even a noob, will give 6 hours of trading of chart practice a day now, like as I said, I will make him a day trader in 60 days because it's very simple. All this, अगर तुम अपना भी कभी प्रोसेस देखोगे, प्रोग्रेस देखोगे ना, तो तुम भी कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे कि कहीं ना कहीं तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ रहेगा इंडिकेटर्स या स्ट्रेटजी ढूंढने में. एवरीबडी सर्चेज ऑन यूट्यूब. आई एम डैम श्योर सबने सर्च किया होगा यूट्यूब पे कि इंट्राडे स्ट्रेटजी, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी, सब सर्च करते हैं, उसमें टाइम चला जाता है. फिर उसके बहुत बाद रिस्क मैनेजमेंट में, या बहुत बहुत ज्यादा. या बहुत ज्यादा हैपेंस विद एवरीबॉडी बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट ना. मेरा खुद 6 मंथ्स गया था वो मूविंग एवरेज समझने में, इतना घटिया चीज. ठीक है. सेकंड कि कुछ लोग एक तो इसमें टाइम चला जाता है, किसी लोगों का रिस्क मैनेजमेंट समझने में टाइम चला जाता है. फिर रिस्क मैनेजमेंट के बाद स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करना है, एंट्री कहाँ है, टारगेट कहाँ है, यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाता है. फिर यही सब टाइम वेस्ट हो के सब माइंड गेट्स ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंपल थिंग विच यू saw previously, but your mind subconsciously tried to ignore that thing and you tried to choose the shortcuts because it's true, everybody loves shortcuts, who won't just love shortcuts, right? So हम लोग क्या करते हैं, ये जो सिंपल चीज है उसको ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इंडिकेटर्स, पीरियड, रिस्क में यहाँ पे पूरे मेज में फंस जाते हैं. So that's why we won't be ever complicating. So as simple as that, we'll keep it up. Candlesticks, beautiful thing which were invented in Japan, and as Japan was always ahead than the world. Okay, so even that time the Japan was really ahead of us. So I hope candlesticks is aware कि candlestick क्या होती है. वही मैंने यहाँ पे लिखा है.
candlestick is OHLC. Everybody knows candlestick, or should I explain the anatomy of candlestick? How it is formed, what it is? Anybody who wants me to explain how a candlestick forms, guys? No? No. No. No, sir. No, no, sir. Everybody is clear about that ना कि candlesticks क्या होती है? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. चलो ठीक है, फिर उसमें टाइम नहीं वेस्ट होगा, क्योंकि फिर you understand. So I hope ये clear है. So moving on. So yeah, this is the bullish candlestick, this is a bearish candlestick. Okay, so next picture is of a chart. ठीक है, यहाँ पे I hope everybody knows this is a trading view platform. I hope everybody knows. Audio not clear. Audio clear है ना आशीष? Okay, 9:17 को लिखा था. Okay, so क्या आ रहा है सर? yeah, so I hope trading view everybody knows. मैंने यहाँ पे यही लिखा, each candle represents the movement of Nifty taken place in 1 hour. फिर ऊपर time frames देख सकते हो. Trading view exactly कैसे use करना है इसका मैं एक YouTube link भेज दूंगा. It's very simple to use trading view, advanced tools in trading view, all and all. It's very easy, not complicated at all. So moving on, single candlestick pattern. So यहाँ पे मैं एक 5 minutes लूंगा on understanding this pin bar. So if you guys follow me on Instagram, so वहां पे पूरा भर चुका है मेरा Instagram का स्टोरी की pin bars never lie, pin bars never lie, pin bars never lie. I hope everybody sees the stories I upload on share market वाला page and also my personal account. मैंने हर जगह हर एक स्टोरी पे, इनफैक्ट मेरे 90% trades are based on bullish and bearish pin bars because these pin bars are so strong and often neglected. ठीक है, so just a second. Okay, डीके डोंट वरी, ये जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा अभी, बट आई विल बी टेकिंग वन मोर सेशन फॉर यू डीके. ओके, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. आई होप तुम्हें मेरी आवाज आ रही है. डीके डोंट वरी, टेकिंग इट अगेन फॉर यू बिकॉज यू आर अ बिगिनर एंड बट आई होप इतना कैंडलस्टिक फॉर्मेशन समझा है. नहीं समझे तो नॉट अ प्रॉब्लम. पुरु एंड तुम्हारे लिए एक और सेशन में लूंगा इसके लिए. ओके Okay, thank you, sir. ओके, जस्ट सुनो, ट्राई करो समझने का, क्योंकि सेल्फ लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जस्ट ट्राई टू कंज्यूम व्हाट आई एम स्पीकिंग, ट्राई टू राइट इट डाउन, अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ. Yes, sir. Okay, cool. So guys, the importance of bearish or bullish pin bar. So suppose the price opens, so just a second. So everybody knows why a pin bar forms, but why it is important, just give me 5 minutes. It's right now 9:35, 9:40 I will be clearing it up with pin bars. So what happens now when price opens here? Okay, the sellers step in and try to push it down, and it tries to push the prices down. So जब भी sellers आते हैं तो क्या होता है, प्राइस नीचे पुश होती है, जिसकी वजह से हम वो सेलिंग प्रेशर नोटिस करते हैं. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, the buyers are so strong, the buyers are so willing to pull the price above. The bulls want to literally beat down the bears. They are like, नहीं भाई, आज का दिन मेरा है. ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, जो भी वो टाइम फ्रेम की कैंडल है, वो टाइम फ्रेम यही कहेगा कि मेरा दिन है आज, मेरा टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम में आई वोंट अलाउ यू टू ओवर पावर मी एंड आई विल beat you. So the beating happens and it pulls the price ahead, pulls the price above, I'm sorry, then pulls the price above, and it finally just has a little high, and it closes somewhere around here. And this is how you get this sort of shape of a pin bar. So it's never like this exactly, it always has some error. So 5%, 10% error here and there is okay, that much cheating is also allowed. So pin bar, bullish pin bar is why is important, because the buyers overpower the bears and they literally push them down, and they literally kill the bears in respect to the time frame which we have chosen. And that's the reason why bullish pin bar is considered as strongest by all of us flawless traders. When you guys will be practicing out in 2 to 3 sessions, you guys will be having lots and lots of clarification of the same, and you won't even have major doubts. But yes, when you will be observing this bullish pin bars
will really work wonders when you even practice. So similarly, on vice versa, the bearish pin bar is like when the price opens, the bulls push the price ahead, and then the bears are like, no, bro, it's my day today, it's my time frame today, so I will be pushing it down as much as I want, and then it closes somewhere around here. So when you see a bearish angle, bearish pin bar, you consider it as sellers are strong, and when you see bullish pin bar, then you consider that the buyers are really strong. So yeah, there is slight uh, technique in actually understanding which is the appropriate pin bar, because not always we won't find the exact proper pin bar all the time, right? So the exact proper pin bar is this one, guys, and this one. Sorry, this one. Just a second. Okay. So the exact proper pin bar is this one, and अच्छा ये अपने आप ही हो रहा है, and this one, ठीक है, and the like sort of 70-60% like pin bar, you know, like a replica of pin bar or like pin bar, is when the body is little small. So when you see such body, see, we won't consider this as a bullish pin bar. Sorry, I have plagiarized this photo from internet. Sorry for that. But we will be not considering a red candle as a bullish pin bar. It is a bullish pin bar, but as we are beginners, we still, even I'm a beginner, so even I don't consider this as a pin bar because the buyers are not yet really strong that it didn't close in the green. So whenever we have little body, then it's a pin bar, and when we have larger body, it's a stronger pin bar. And when we ऐसा, and when we have no high, like when it is like this proper, then it is the strongest. So this is the strongest, this is kind of intermediate, and sorry, I should draw it like this, I guess. Wait, yeah, and इससे strong होता है greater the wick, greater the rejection, and greater the price. So imagine ना, just use common sense, यहाँ से price यहाँ तक ऊपर खींचे है buyers, and it instead closed above the open, right? So common sense that the greater the wick rejection, and if it closes in green, then it's very strong. So number one strong, number two, number three, and number four, and vice versa for the bearish pin bar. Okay, यहाँ तक clear है why pin bars are important, guys? Yes. This Yes, is sir. basics. I know this is basics, but it's my duty to Yes, sir. point it out all the basics also. So Chirag, Yeah. all good, bro? यहाँ तक? Yeah. Yes. Yeah. And okay, Jay is like clear, fine. So okay, cool. Moving on. Next. Okay. Sorry. Okay. So moving on. The doji and its types. So this is also important. Doji represents the fight between the buyers and the sellers. Everybody knows the definition of. I'll just take 2 minutes to define a doji. So ये open है, buyers push करते हैं, sellers push करते हैं, buyers और push करते हैं, sellers और push करते हैं, and it ends up closing जहाँ पे open हुआ था वही. So what it indicates? The equal. When a 10-year-old lion fights a 10-year-old lion, दोनों की strength same है, दोनों में energy same है, दोनों में enthusiasm same है, दोनों का age same है. So most often दोनों equal ही रहेंगे and tie हो जाएगा. So tie समझते हो ना, like the tie which happens in every sport also. So the same tie, when it happens on candlesticks, it's a doji. So that this is how you see such pattern here. A common doji which you will see a lot of times, which often takes place in the formation of morning star and evening star. Okay, the long legged, it's just like a spinning top. It's a very weak, a long legged doji is a very weak. Okay, gravestone doji is the doji, but यहाँ पे gravestone doji में it's a strong bearish setup. It's a 40%, 49% it's a pin bar. ठीक है, वो 50%, 50 के ऊपर पिन बार कब होता है? जब वो ग्रीन में, रेड में क्लोज होता.
So gravestone doji, always remember, is a bearish signal because it is 49% similar to the bearish pin bar. Just वहां पे एक नीचे एक closing देता और red में body बनती, तो वो एक proper 51% and above वाली bearish pin bar होती. Then the dragonfly is inverted to the gravestone, and the dragonfly is indeed the uh, bullish pin bar sort of pattern, the 49%, the vice versa I spoke. So I hope doji and its type is clear. It's very basics, not a problem, I think. So moving on. Yes, sir. Yeah. So the Marubozu, this is also very strong, a good indication. Nice thing. I will move on. I guess Marubozu is very easy to understand. Open and close is there. Open and close is there for the red. So इसमें हाँ टेक्स्ट बुक में कहते हैं मारूबोजू ऐसा दिखता है, बट बहुत रेयरली यू विल एवर सी ओपन इज इक्वल टू लो एंड हाई, क्लोज इज इक्वल टू हाई. समटाइम्स थोड़ा सा वो छोटा सा जो डॉट टाइप होता है, यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व दैट बिकॉज इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि मारूबोजू इतना परफेक्ट बनता है, बट बनता है, कभी कभी दिखता है. लाइक क्रूड ऑयल जब गिरा था इतना जीरो, तब ऐसे ही सारे कैंडल्स थे. सो वैसे टाइम पे ऐसा होता है, बट majorly 90% times you won't really observe this clear marubozu, but yes, the marubozu also indicates a strong whichever color it is wala indication. So moving on, next is a bullish engulfing. So I forgot to say one point. Okay, so see, bullish engulfing is our second god. The number one god is our pin bar. Okay, the second god is engulfing. So what I want to say is, are we really going to trade every pin bar we see? Obviously, I guess the answer is no only. But why? Because can you imagine a V12 engine in a Alto? You won't. You can't run an automobile which is not compatible with V12 engine, right? So similarly, V12 is compared to pin bars and V8 is compared to bullish the engulfing patterns. So ऐसा नहीं है कि कहीं भी engulfing दिख गया और वहां पे trade करना है. Okay, so engulfing is our second. How we will use this confluences, when we will see this, we'll be covering it up later in the stages. So this is just the basics, we are clearing it up. A valid bullish engulfing you can see, and a valid bearish engulfing you can see. This is the only appropriate engulfing example. आज गूगल पे डालोगे engulfing, अलग अलग टाइप्स के engulfing पैटर्न्स मिलेंगे. दिस इज द ओनली प्रॉपर व्हेन हाई एंड क्लोज दोनों पूरा ग्रीन कैंडल खाता है, एंड जब रेड कैंडल पूरे ग्रीन कैंडल का हाई एंड लो खाता है, पूरी बॉडी और पूरा कैंडल जब वो खाता है, तो दैट मींस इट्स एनगल्फिंग. दैट्स व्हाई इट्स अ वैलिड बुलिश एनगल्फिंग. दैट्स व्हाई वो वैलिड वहां पे लिखा है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग अलग अलग ऑथर्स का अलग अलग एस्टिमेशन है कि एनगल्फिंग अलग टाइप्स के भी दिखते हैं, बट दिस इज द ओनली वन व्हिच इज एप्रोप्रिएट एंड वैलिड. So moving on, the third god of us is morning star and evening star. Sorry, again, this photo is again taken from internet. It might not be clear, but yes, the morning star kind of looks like this. जो बीच की candle है, that is mostly a pin bar, and जो evening star होती है, that उसके बीच में भी mostly is a doji or a spinning top or a pin bar. So before moving on, I want you guys to write few things up. Okay, I'll be dictating it. Please write it down, or just if you are I am recording it anyhow, but if you have good listening skills, then not an issue. ठीक है, मैं यही कहूंगा कि जितनी ज्यादा कैंडल्स कुछ कहती, कैंडल्स आर ऑलवेज ट्राइंग टू टॉक विद अस. ठीक है, सो ये जो कैंडल्स जब कहती है, तो हमें उनको अच्छे से रीड करना है. सपोज एक लेवल पे डबल पिन बार्स दिखते हैं, सो स्ट्रॉन्गर द सिग्नल. ठीक है, हमें पिन बार के पहले बेरिश एंगल्फिंग दिखता है, सपोज बेरिश पिन बार के पीछे बेरिश इवनिंग स्टार दिखता है, सो इवनिंग स्टार, एंड उसके बाद हमें बेरिश पिन बार दिखता है, इट्स स्ट्रॉन्गर. सो यू नीड टू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड कि वो जो कैंडलस्टिक बनी है उसके आसपास का क्या कह रहा है. ठीक है, सो दिस इज द इनर थिंग यू हैव टू रीड ऑन द चार्ट, कि जो मॉर्निंग स्टार बना है, पहली बात तो कहाँ बना है, ऐसी नो मैन्स लैंड पे तो नहीं बना है, कहीं ना कहीं तो बना होगा. कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, विल कवर इट अप लेटर, बट जस्ट रियलाइज फ्यू थिंग्स, दैट कैंडलस्टिक्स के फॉर्मेशन जब होती है, उसके आजू बाजू देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड मोर क्लियरली कि क्या एक इंडिकेशन रियली आ रहा है या नहीं आ रहा है. So always try to see 3 to 4
candles away from the candle which you're concentrating on, it will really help you read beyond what is happening in at that time. ठीक है, पहले क्या हो रहा है अच्छे से देखोगे ना 2-3 कैंडल्स, इट विल रियली हेल्प यू. फॉर एग्जांपल एक बहुत स्ट्रॉन्ग विक रिजेक्शन वाली कैंडल है एंड उसके बाद एक एनगल्फिंग कैंडल है. सो इट मींस क्या कि इट्स फॉलोइंग अप. द कैंडल्स आर टेलिंग अस समथिंग कि भाई पहले तो हमें विक रिजेक्शन दिया है, उसके बाद तो क्लियर इंडिकेशन सेकंड गॉड आ गया है, सेकंड गॉड इज एनगल्फिंग. सो दिस इज हाउ यू विल realize few things when you see the charts. So this is very important insight I wanted to share before moving forward. So yeah, I hope you guys are clear with it. So any doubts before moving on module 4, because module 4 is really important, it might take our larger amount of time. So यहाँ तक किसी को डाउट है कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स? सर जो विक रिजेक्शन जो आपने बोला था वो क्या है? अच्छा ओके, उसका एग्जांपल देता हूँ. सो विक रिजेक्शंस मतलब विक क्या होता है? विक इज शैडो, आई एम सॉरी, शैडो. ठीक है, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये विक होता है, इसे विक कहते हैं एंड इसे भी विक कहते हैं. ओके, सो विक Yes, sir. रिजेक्शन मतलब क्या होता है? विक रिजेक्शन मतलब सपोज ये ऐसे फॉर्म हुआ है. सो क्या हुआ है, ये विक्स ने, ये जो विक्स है, इन्होंने सेलर्स को रिजेक्ट किया है और प्राइस ऊपर पुश की है. दैट मीन्स इट इज अ विक रिजेक्शन, राइट? मेकिंग Yes, सेंस? समझ रहा है? फॉर एग्जाम्पल इसका उल्टा, सपोज प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ पे गया तो हमें कैसे पता होगा? क्योंकि यहाँ तक जब जाएगा तो कैंडल तो ऐसी फॉर्म होगी, राइट? Yes, sir. ऑनेस्टली कैंडल ऐसी फॉर्म होती है क्योंकि वो ऐसी जाती है. और फिर अचानक से यहाँ पे सेलर्स एंटर करते हैं, दे आर लाइक नो, आई वोंट सी द प्राइस अहेड, एंड देन दे विल pull this price below the open, and when it pulls, so this candle looks like this. So what this indicates that this wick rejection is strong. So जितना लेंथ बड़ा होगा वो wick का, उतना स्ट्रॉन्ग होगा जिसने वो wick बनाया है. अभी इस पर्टिकुलर केस में किसने wick बनाया है? सेलर्स ने बनाया है. So I will clear it up again. Wait. मतलब Just a सर पेन second. बार टाइप, राइट? या पिन बार टाइप, बट हर बार तुम्हें पिन बार नहीं दिखेंगी. फॉर एग्जांपल तुम्हें ऐसी कैंडल दिखेगी, ऐसी ऐसी कैंडल जो स्पिनिंग टॉप है, ये तुम्हें कभी कभी ऐसी कैंडल दिखेगी, ये भी पिन बार नहीं है. दिस इज वेरी, पिन बार में ये जो होता है ना टोपा, ये टोपा बहुत छोटा Yes, sir. होता है, ठीक है, तो ये इसलिए ये पिन बार नहीं है. ठीक है, तो कभी कभी तुम्हें ऐसे दिखेगा, ये जो डोजी है ग्रेवस्टोन, ठीक है. सो ये सारी चीजें हमें देखनी होती है. सो सपोज यहाँ पे ऐसा प्राइस आया है, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा रिजेक्शन प्राइस, विक रिजेक्शंस है, विक रिजेक्शंस है, विक रिजेक्शंस है, विक रिजेक्शंस है, एंड देन यू विल रियलाइज कि यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग आया है. सो व्हाट यू गाइस थिंक व्हाट कैन हैपन नाउ? प्राइस एक तो नीचे आया है, बॉटमिंग आउट हो रही है, विक रिजेक्शंस है. सो विक रिजेक्शन मतलब क्या है? यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे बायर्स है, एंड फाइनली देयर इज एन एंगल्फिंग पैटर्न. सो देन यू कैन गो लॉन्ग. आज का मेरा इंस्टाग्राम पे स्टोरी इसी बेसिस पे था, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ विक रिजेक्शंस. So always we have to keep our eyes open and also find wick rejections on our place, and which place, what place, we will be covering it up later. क्योंकि wick rejections normally कहीं भी होते हैं. Like I explained कि V12 engine तो अच्छा है ही, powerful है ही, but that V12 engine won't make any sense if you put it in auto car, right? So that's why things like wick rejections, things like reading candlesticks exactly in a proper way, कैंडलस्टिक जो फॉर्म हो रही है उसके आजू बाजू क्या बना है, कैसे बना है, क्यों बना है, विक रिजेक्शंस किसने बनाए हैं, वो ये सब चीजें अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सम लिटिल इनसाइट्स. ये क्लियर है पुरु? आई गेस पुरु आस्क्ड मी और एल्स Yes, sir. डीके आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. Yes, sir. क्लियर है विक रिजेक्शंस Yes. क्यों इंपॉर्टेंट होता है? Yes, Okay, sir. so just a second, we'll be moving with the module 4 now. So this is module 4, ठीक है, support and resistance. Okay, so support and resistance सबको पता है? नहीं पता है, I will again explain, not a problem. So support is the price level where a downtrend can be expected to pause due to the concentration of demand or buying interest. As the price of assets or securities drop, demands for the share increases. So simple, just थोड़े intermediate लोग, please try to bear with me, just 2 minutes I will take for this explanation, as it's my thing to explain these basic things.
तो सपोर्ट क्या होती है ना, सपोज यू थ्रो अ बॉल ऑन अ बॉल है, आप फ्लोर पे फेंक रहे हो, ठीक है, तो जब भी वहां से बाउंसिंग होती है तो उसका मतलब क्या है, ये बॉल है, ये फ्लोर है, ठीक है, यहाँ पे तुम ऐसा बॉल फेंके हो, यहाँ से बाउंस होगा, राइट। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक फोर्स जनरेट हो रहा है, force is equal to ma, right? And when the price again comes there, again you will find a push or a force, right? तो again ऊपर जाता है, so this is a support, तो ये force is nothing but support, and whenever सीलिंग पे एक प्राइस जाके आप वही बॉल को ऊपर पंखे के जो बॉल है वहां पे ऊपर सीलिंग पे अगर थ्रो करोगे, तो यहाँ पे भी पुश मिलेगा नेगेटिव में, तो ये भी नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ये पुश आएगा। सो वेन एवर इन सिंपल टर्म जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट इज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंसेस, सो whenever the price bounces from the floor it is known as support, whenever the price bounces from the ceiling it is known as a resistance. So यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाया है, just an understanding of how this looks like, just an example. So see, ऐसे होता है वो, so सपोर्ट पे प्राइस बाउंस होता है, रेसिस्टेंस पे प्राइस नीचे आता है, ठीक है, बाउंस मतलब नेगेटिव बाउंसिंग आती है, ठीक है। अब ये फ्लिप क्या है, कैसे होता है, वी विल बी कवरिंग इट अप लेटर, एंड जिसको इंटरमीडिएट से आई गेस दे नो ऑलरेडी कि व्हाट इज ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, ठीक है। मूविंग ऑन, why SNR are not enough. So people, I have seen lots and lots and lots of traders who, just 3 minutes of introduction, I have seen lots and lots and lots of traders in initial stages, they think support and resistance है, समझ लिए तो बस हो गया हूँ मैं बापू, support पे price आ गया they will buy, resistance पे price आ गया they will short sell, but support and resistances are not enough because you need to consider other factors or confluences before taking a trade. For example, before buying a new phone, do you really see only camera? You don't. You see the battery backup, you see the camera function, you see how many cameras are there on the back, you see is there a flash on the front camera also, what is the display size, what RAM it carries, which chipset it has in the phone, then touchscreen to hey, does it have a face reading, and all these things you consider before buying any phone, be it of 10,000, be it of 50,000, be it of 2 lakhs, ठीक है। So in any phone, in any case, whenever you buy something, whenever you put your money in, guys, you need to consider different factors. So support and resistance is सिर्फ एक one of the factors है एक particular चीज खरीदने में या बेचने में, to create any position, to be honest, ठीक है। So that is why support and resistances are not enough, because it's not just enough, ठीक है। Like an example I shared about the mobile phone, you need more and more and more and more confluences or factors in short term कि कैसे exactly एक particular position clear करनी है, ठीक है। So I hope support and resistance is clear, why support and resistances are not enough. Do you guys have any question till now? If you have any debatable and counter question that yes, support and resistances are enough, anything you have, you can let me know now, right now. So 2 minutes for quick questions. Anybody has any quick questions regarding whatever we have, revised till now? No, Guys, none from my side. anybody else? Ashish, yeah, Ashish, are you there? Chirag, Ashish, Jay. सर थोड़ा वीडियो लैग हो रहा है सर। लैग हो रहा है थोड़ा, किसको लैग हो रहा है? हाँ लैग किसको, वीडियो अभी लैग हो रहा है? हो रहा है सर। अच्छा यार, उसमें उतना थोड़ा बेयर करना पड़ेगा यार, बट मेरा आवाज तो लैग नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं हाँ, आवाज लैग नहीं। सो एनी डाउट्स टिल नाउ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के ऊपर? आई गेस जय हैज रिप्लाइड ऑन नो लैग। ओके, ठीक है, किसी को लैग है अपना प्लीज इंटरनेट चेक करो कहीं ना कहीं, व्हाट्सएप नो लैग फॉर मी इधर। ओके, सो आई गेस माय नेटवर्क इज राइट। आशीष, ट्राई टू नहीं सर। have yeah, try to please sort it out. Okay, cool. So moving on, why support and resistance are not enough, SNR, I guess these little cute things are clear to you guys. So moving on, what are zones? So यहाँ पे हमारा ज़्यादा most of the time जाएगा, because this is like very important. Do anybody know what are zones? Please be interactive, let's answer, let's talk to each other. Anybody who knows what are zones? Jay,
Acha, he's texting. Okay. Okay, Chirag has no idea about zones. Jay, you have idea about zones. Anybody else? Ashish, you have any idea about what are zones? नहीं सर नहीं. Nahi? No, right? Okay. Then who else we have? Akshay, any idea what are zones? No. Okay. Jay, can you please type it out if you can? I guess maybe where the largest wick wink line is formed. Wick line. Do you mean wick line, Tanmay? Yeah. Wick line, I guess you mean. Yes, sir. Okay. So Jay, can you please type it out, or if you can speak and just yeah. Sorry for the type. Yeah, it's okay. Typo error Yeah, happens. yeah. So, Jay, can you So, please try to yeah. yeah, what I basically know is when I find two horizontal lines very close to each other on chart, I consider it as a zone usually. Like when I'm plotting horizontals, let's say on 30 minutes, and I'm finding like two horizontals very close to each other, and there is activity within that zone, so then I consider it as a zone basically. Like I don't trade within that zone ever. So what Like happens when the price comes to the zone? it's supposed to consolidate, I guess. Okay, Like so yeah, hold for a the bit. so you mean that a zone is a place when it's a ranging, like right? The price is ranging between the two support and resistances. Like it's You mean supposed to hold, I guess. Like it's like if it's falling into a support zone, like a Mhm. demand zone, so it's supposed to give us some sort of pivot so that we can know it's either go up or down. But ऐसे तो प्राइस पे यार हजारों zones बन सकते हैं. So which appropriate zone you will choose then? Any answer to that? Then I will be like, okay, you know zones. नहीं नहीं इतना मतलब क्लियर इतना नहीं आइडिया है एग्जैक्टली Okay, नहीं मालूम ओके. तो कैसे होता है ना गाइस, सी ऑनेस्टली जब भी तुम चार्ट्स खोलोगे गाइस, सो ऑब्वियस है कि तुम्हें हजारों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस मिलेंगे, राइट? यू विल फाइंड ऑल, इनफैक्ट ऑल द लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हर लेवल पे रिजेक्शन आता है, राइट? लाइक इफ यू सी कि अप एंड डाउन मूवमेंट ही क्यों आती है, बिकॉज कहीं ना कहीं वहां पे ही तो है सेलर्स एंड बायर्स प्रेजेंट हर लेवल पे. ठीक है. So support and resistances and zones are everywhere, but what we need to find are appropriate zones. So zone is an area on the chart where the largest possible activity has taken place. Like just give me 2 minutes to explain what can zones be. So suppose तुमने कभी घाट पे ड्राइव किया होगा, तो वहां पे ना एक साइन बोर्ड होता है, एक्सीडेंटल प्रोन एरिया. Have you ever seen that? I'm sure you might have seen that. So वो क्यों है वहां पे? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी हुई है, वहां पे एक्सीडेंट हुआ है. दिस एक्सीडेंट इज सिनोनिम विद the accidents which are taking place in that particular zone of that ghat, right? So when you drive your car, when you're driving your car, suppose with 50 miles per hour, and when you see that wahan pe ye particular signboard present hai, राइट? सो तुम क्या सोचते हो, ओ ओके ओके, यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्सीडेंटल प्रोन एरिया लिखा है भाई, आई गेस वी नीड टू बी कॉशियस, यू विल टेल योर फैमिली टू हैव सीट बेल्ट्स ऑन, एंड देन यू विल डिक्रीज योर स्पीड टू 10 miles per hour, and then you will be driving safely, right? You will be more cautious, right? You will be more cautious about कि वहां पे भाई कुछ साइन दिया है, like school ahead कोई साइन होती है, you slow down the speed, you slow down your pace, any sign, any village ahead, any sign while you drive, you always take into consideration that you need to be as cautious as you can, and you follow the rules whichever has given, right? So zones are the areas on the chart where largest possible activity has happened. कुछ तो हुआ है उस प्राइस पे, either रिवर्सल हुआ है, या तो ब्रेक एंड रिटेस्ट हुआ है उस लेवल का, या अलग अलग चीजें वहां पे हुई है. अभी क्या हुई है, कैसे हुई है, ऑब्वियसली आई हैव सेड दैट वी विल बी कवरिंग इट अप. यहाँ पे लिखा है मैंने इन फर्दर मॉड्यूल्स, बट टुडे वी विल बी कवरिंग इट अप जोन्स ओनली. आज हम सिर्फ बाकी का जितना टाइम बचा है हम सिर्फ जोन्स ही करने वाले हैं, बिकॉज यू गाइज विल बी हैविंग असाइनमेंट्स आफ्टर दैट, एंड इट विल हेल्प अस. सो द पिक्चर्स, सो एक स्लाइड गुड एग्जाम्पल है मेरे पास. दिस एग्जाम्पल इज नॉट क्रिएटेड बाय मी, एक मेरे स्टूडेंट ने किया था ये. सो ये उसने ये पर्टिकुलर जोन बनाया. यहाँ पे पर्पसली मैंने पहले पिक्चर में डिमांड जोन डाला नहीं है, एंड सेकेंड पिक्चर में सप्लाई जोन डाला नहीं है. सो कैन जय नोज व्हाट आर जोन. सो कैन यू प्लीज आंसर कि जो पहले फोटो में सप्लाई जोन जहां पे लिखा है, इज इट राइट और रॉन्ग? इज दैट अ जोन? जय, कैन यू प्लीज अनम्यूट, बिकॉज चैट मेरे को वापस खोलना पड़ेगा, चैट बॉक्स.
I think so. Why do you think so? What are the underlying principles you're trying to have before guessing that yes, it's a zone? I mean, like the Yeah. initial trend is downtrend, and it retraced to that level, and then it fell again. ओके बट ऐसे तो फिर यार ये भी एक जोन होना चाहिए फिर ऐसे तो प्राइस तो यहाँ पे भी रिजेक्ट किया है यहाँ अरे यार जस्ट अ सेकंड या सो ऐसे तो प्राइस गाइस यहाँ पे भी रिजेक्ट हुआ है यहाँ पे भी हुआ है तो ये भी एक जोन होना चाहिए ये भी एक जोन होना चाहिए तो ब्रेकिंग द वहां क्लाइमेक्स से फॉल आया ना, आई थिंक। जहां से फॉल आता है उसको कंसिडर करते हैं ना। कॉल आया मतलब फॉल फॉल कॉल ओके जहां से या फॉल। मेक सेंस okay fine so why this was a zone guys number 1 largest big rejections what big rejections what we all want to find is greater and greater number of wick rejections so इस particular chart में यहाँ पे ये एक wick rejection था इतना ज्यादा wick rejection है then we have a wick rejection here wick rejection अरे what's happening just a second guys excuse me for this so we have a wick rejection here also and we have a wick rejection here also right so while identifying any zones we will be finding largest possible wick rejections जितने ज्यादा wick rejections उतना ज्यादा strong होगा वो level so समझ गया what is the first primary point while considering a zone guys तो ये रेजिस्टेंस Yes. जैसा नहीं बना थोड़ा सा ये लाइन resistance but again I will be क्या बोलते हैं उससे डिफरेंस बता दूंगा मैं कि रेसिस्टेंस एंड जोन में क्या होता है ठीक है तो ये जो जोन होता है वो 90% रेसिस्टेंस ही होता है बट एक थोड़ा सा 10% का जो स्लाइड डिफरेंस है ना वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है चार्टिस्ट के लिए आइडेंटिफाई करने में क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं वही 10% में राइट सो आई होप फर्स्ट क्राइटेरिया समझ गए टू आइडेंटिफाई अ जोन इज लार्जेस्ट पॉसिबल विक रिजेक्शन तो पहले चार्ट में एक और सा जोन है वो कौन सा है कैन यू गाइस प्लीज ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट एनी गेसेस पहले ये वाले चार्ट में एक और एक और जोन है कैन यू प्लीज ट्राई टू गेस दैट जोन Support before the second Anybody? fall wala line. दिस वन सर वो यस सर Yeah. ओके तो मैंने बता ही दिया यार गलती से ओके फाइन सो यस दिस इज अ जोन सो व्हाट डू यू थिंक व्हेन अ प्राइस विल कम हियर व्हाट डू यू थिंक कुछ तो हो सकता है यहाँ पे कुछ तो हो सकता है लाइक क्या ये डायरेक्टली या तो यहाँ पे दो चीज है या तो ये पुश करके ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा ये यहाँ पे ये पुश करके नीचे जाएगा व्हाट डू यू थिंक अगर इमेजिन करो हाइपोथेटिकली गाइस दैट ये जो तुमने लेवल अभी बनाया है प्राइस वहां पे वापस आता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे तो यही दोनों में से कुछ चीज होएगा ना या कुछ और चीज भी हो सकता है नहीं, आंसर ये दो ही हो सकता है तन्मय नहीं तन्मय ये दो तन्मय यही दो हो तन्मय सकता है यही तो हो सकता है हु आंसर दैट चिराग चिराग एंड आशीष व्हाट डू यू थिंक तन्मय यही दोनों हो सकता है कुछ और भी हो सकता है यहाँ पे यही हो सकता है सर। यही हो सकता है राइट Yes, बट sir, I अगर guess. प्राइस यहाँ पे आया तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे सेल कर दोगे क्या क्या देखोगे यहाँ पे व्हाट आर यू गोना फाइंड इन हियर व्हेन द प्राइस कम्स आई प्राइस थिंक रिजेक्शन विक्स कैसा कैंडल फॉर्म हो रहा है वहां पे एक प्रॉपर थोड़ा सा इंतजार वर्ड करेंगे है कि एक वर्ड है बस आगे वो एक वर्ड है बस एक वर्ड बता दो ब्रेकआउट जो मैंने पहले हाँ हाँ प्राइस एक्शन। the word is कॉन्फ्लुएंस ओके conferences so you are going to find largest possible conferences so for example
अरे व्हाट्स हैपनिंग। तो प्राइस यहाँ पे आया है, प्राइस यहाँ पे आया है। अभी सपोज यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एकदम, हाँ लाइक एक दो सिर्फ रेड कैंडल्स है और इतना स्ट्रॉन्ग ऊपर आया, तो क्या डायरेक्टली यहाँ पे पिन बार है तो सेल करोगे क्या? अच्छा, जस्ट टेल मी, आंसर मी वन थिंग, सपोज एक स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग पुश है, तो ये स्ट्रॉन्ग पुश के बाद प्राइस अगर इस लेवल पे आएगा और पिन बार बन गया, तो आर वी गाइस गोना सेल ऑन दैट पिन बार which has happened on the zone? Are we gonna कौन sell सा it? Who पिन बार is है, बेरिश या बेरिश पिन बुलिश? बार है? वेरी बेरिश, ऐसी बेरिश पिन बार है, प्रॉपर है, हाँ एकदम प्रॉपर है, ठीक है। तो पहला कॉन्फ्लुएंस ये है कि वो एक बेरिश पिन बार है। सेकेंड कॉन्फ्लुएंस ये है कि वो एक जोन के यहाँ पे आया है जहाँ पे एक सर्टन एक्टिविटी हुई है, राइट। सो दो कॉन्फ्लुएंसेस है। सो व्हाट डू यू थिंक, ये दो कॉन्फ्लुएंस के बेसिस पे कैन वी टेक अ सेल हियर? नहीं। नहीं। अच्छा, हु इज फॉर सेल्स हियर? फट 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 फट, फास्ट फास्ट, हु इज फॉर सेल्स हियर? I think we should sell यहाँ पे. Who is for selling? चिराग. Okay, Chirag is for selling. Who is against the sell right now? Me, Puru. Puru. Okay, rest. Other guys? नहीं सेल करूंगा सर। नहीं सेल करेंगे। अक्षय ना? आशीष। और ठीक है, और अगर सपोज यहाँ पे समझ लो गाइस, ये एक ऐसा ऐसा लेवल है और ये प्राइस ऐसा है, और सपोज यहाँ पे वीक पुश है, ये कैसा पुश था, स्ट्रॉन्ग था, तो ये वीक है, और यहाँ पे सेल है, यहाँ पे पिन बेरिश पिन बार है। सो ही इज गोना सेल हियर, हु इज गोना सेल हियर? हाँ ये सर यही स्ट्रॉन्ग है, सेल करना पड़ेगा। सर यहाँ पे सर. यहाँ पे सेल लेंगे और यहाँ पे सेल नहीं लेंगे, राइट? यस सर. यस। क्यों ऐसा, क्या रीजन है उसके पीछे? सर वहाँ पे जय, बुल्स. एनी आंसर फ्रॉम जय? ब्रो, व्हाट्स अप? बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ आई गेस। कहाँ पे? लाइक अगर बहुत जैसा आपने पहले केस में बोला, अगर बहुत अच्छा पुश है तो फिर बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ ना ओके, एंड यहाँ पे उसमें। दैट इज सॉर्ट ऑफ अ रिट्रेसमेंट एंड नॉट अ गुड पुश। kind of same. So guys, Chirag, realize one thing that see, we need to read the charts. See, यहाँ पे पहली बात क्या हो रही है? Nobody answered this, but I wanted people to at least कोई तो बोले कि ये एक ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है and एक हायर हाइज आर फॉर्मिंग, राइट? एंड ऊपर से आई हैव सेड कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुश है. So whenever you have this strong push, sorry. Sorry. So whenever you have a strong push, guys, what we are gonna wait for is the number of confluences. So यहाँ पे confluences दो तो थे, but तीसरा confluences weak था कि the push, the bullish pressure is literally little strong. So what we guys are gonna wait for is simple, and the only thing which I apply is no rocket science, is a confirmation. That confirmation will be one of the two things. One will be a double top. Everybody knows what's a double top? Double top guys, ये आगे के मॉड्यूल्स के मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। एग्जैक्टली आगे के मॉड्यूल्स में गाइस। तो या तो पुरु है गाइस, राइट? डबल टॉप, यस सर. डाउट या। सो Doubt. डबल टॉप क्या होता है ना पुरु, सिंपल है, देखो एक लेवल है, राइट, ये वाली, ठीक है। प्राइस यहाँ पे आके दो बार टच करता है ना, तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, कितने बार टच किया है? अच्छा ठीक है, डाउ थ्योरी. Yeah, Dow theory. Yeah, Dow. Wow, Yeah, nice. You know Dow theory. Cool. So okay, Dow theory. Yes. So nice. Okay. So yes, the Dow theory. So you know that M pattern and the Dow theory, that yes, it's a yes sir. double top Hmm. and the double bottom. So इस particular case में what we guys are gonna wait for, whenever push is strong, तो ये push तो strong तुम observe करें, इसके पहले भी चीज देखना है, ये price rejection इतना strong है, यहाँ पे हायर लोज बन रहे हैं, यहाँ पे हायर लोज बन रहे हैं, इंस्टेड ये तो एक पिन बार है, फिर ये एक हायर हाइज कहीं ना कहीं फॉर्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यहाँ से नीचे तो जा सकता है, बिकॉज इनिशियल ट्रेंड तो वैसे तो डाउन ही है, राइट? बट
what we really want is an intraday trade, right? So maybe उसका आगे का P हो सकता है, but we don't want our stop loss to get hit here. So whenever the initial push near the zone is strong, we guys are gonna wait for is number one, at least a double top or a lower high. How this lower high will be significant, and you know that that's a lower high, is at least it will retrace 50%, ठीक है, or either it will सर ये लोअर हाई क्या था? lower high. Okay, so Dow theory guys, अरे यार ये क्या हो रहा है, just a second. So see what lower high मतलब क्या होता है, see ऐसे जब होता है ना, any answer guys, what is this? Higher highs. अपर ट्रेंड सर. ठीक है, so see ये क्या है, higher high, what is this, a higher low, ये low है. अभी जब इसके ऊपर ब्रेक हुआ राइट, ये तो इसके कंपेयर, इसके कॉन्ट्रास्ट में ये हायर है या लोअर है, ये पॉइंट इसके कॉन्ट्रास्ट में है, हायर हायर है. सो हायर हाई, इसके इसके और इसके कॉन्ट्रास्ट में ये क्या है, हायर हाई हायर लो लो. सिमिलरली यहाँ पे भी ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हम बाद में करने वाले हैं, बट स्टिल जस्ट वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट द बेसिक्स ऑफ, हम सब अभी फिलहाल मिक्स कर रहे हैं, एंड देन वी विल बी अप्लाइंग इट विद प्रॉपर थिंग. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है गाइस, यहाँ पे हायर हायर फॉर्म हुआ है, इसके कंपैरिजन में नहीं. व्हाट इज दिस, अ डबल डबल टॉप. टॉप. What happens after you guys are gonna get such trades a lot, okay? So what is happening, are we gonna sell here, are we gonna sell here? यस सर. Absolutely not. Nope. We may never know. See ये दिखने में ऐसा, एक्चुअल में पता है कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है. Actually this market structure looks like this. Okay, ओके. इतनी इजी नहीं दिखती है, ये ऐसी 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 होती है. सो यहाँ पे जब लेवल है, तो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू, वी नीड टू कीप पेशेंस एंड वेट फॉर द रीसेंट हायर लो टू ब्रेक और गोइंग फॉर सेल्स. सो इन दिस केस द रीसेंट हायर लो इज दिस, is in compared to this. यस सर. इसके कॉन्टेक्स्ट पे गाइस, आई गेस आई एम यहाँ तक, दिस इज जस्ट द बेसिक आई वांट टू क्लियर, हम लोग ये क्लियर करेंगे. एनीबॉडी हु थिंक्स दैट मैं फास्ट जा रहा हूँ, या वी शुड सी दिस पार्ट्स इन लेटर स्टेजेस ओनली, एनीबॉडी, you guys can be as polite and frank as you can, please. Anybody has any suggestions that we should cover this part later in the stages? नहीं सर, अगर बाद में भी अगर करवाओगे भी तो बाद में तो कराना रिवाइज ही भी है, हो जाएगा. हाँ तो बाद में तो अभी कराना ही, बट सही चल रहा है. अभी करूँ या नहीं करूँ, should I do this? अभी मतलब अगर यूज आ रहा है तो फिर एक एक बारी थोड़ा थोड़ा Okay, cool. बताते चले जाओ. Anybody else has any suggestion? Jay, should I do this or not? Yeah, Tanmay, I think it like works. Tanmay, any suggestions from you, bro? Yes, sir, it works. No problem at all. We do it now. Okay, Ashish, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay, cool. चलो ठीक है, because I really like market structure and I just, मैं हर बार यही end up कर देता हूँ सिखाने में, because it's really great. So anyways, so the confirmed down trade is when a recent higher low is broken. And are we gonna trade here? कहाँ गया pen? Are we gonna trade here? Is absolutely not. Okay, it went. So क्यों नहीं हो रहा है? Okay. So are we gonna enter here? यहाँ का break हो गया? Absolutely not. What we are gonna wait for is a retest. So यहाँ पे retest आने के बाद guys, the confluences part. पहला confluence क्या है कि यहाँ पे suppose pin bar है. पहला confluence क्या है? एक bearish pin bar. Second confluence क्या हो जाएगा? Double top है भाई. बहुत strong indication है.
थर्ड कॉन्फ्रेंस क्या हो जाएगा? अ रीसेंट हायर लो का ब्रेक हुआ है एंड रिटेस्ट हुआ है, दैट विल बी कॉल्ड एज PR. This candle will be known as CS from now on. तो CS है, प्रॉपर CS है, प्रॉपर डबल टॉप है, प्रॉपर ब्रेक एंड रीटेस्ट है. फोर्थ कॉन्फ्रेंस ये होगा कि इस पर्टिकुलर लेवल पे काफी ज्यादा इसके पहले बेरिश पिन बार के पहले काफी ज्यादा विक रिजेक्शन आएंगे, तो विक रिजेक्शन हमारे लिए फोर्थ कॉन्फ्रेंस होगा. फिफ्थ कॉन्फ्रेंस ये होगा कि ये जो ट्रेंड है इसका प्रॉपर ब्रेक हुआ है, प्रॉपर ये हुआ है एंड कैन बी कंसिडर्ड एज अ first initiation of the downtrend leg, and it can be a proper low high. So when you have all these five confluences, can't you be confident enough to just execute a trade here? When you have a proper candlestick setup, when you have a proper wick rejection before the candlestick setup, when it's a break and retest of a recent higher low, higher low, then the last confluence would be the selling pressure from the prior double top which we have observed. So do you really guys think that you cannot take a trade here, we cannot take a short here? Any guys can answer me this? Would you personally take this trade when you have these level of confluences? Yes, sir. Anybody Yes. else who won't really trade and who is waiting for more confluences as or she is a more conservative trader? Anybody? So everybody would be trading, right? So yeah. So okay, just a second. So we always are gonna wait for and see is how strong is this leg. If this leg is strong, guys, we are gonna wait for is a double top, and double top में यहाँ पे order execute नहीं करना है. We are gonna wait for confirmation or a CS. ठीक है? And after this we can enter here, and if this and and it can form a double top here if buyers are strong, and if it can't form a double top, what can form is a missed double top which is known as a MPT. This is actually कौन सी मेरा word नहीं है, ये actually exist करता है. ठीक है? Missed double top मतलब वही होता है कि buyers are insufficient to get this price near this level, and कहीं ना कहीं यहीं पे candlestick setup form करता है, crash होता है. ठीक है? तो समटाइम्स यू गाइज नीड टू रियलाइज कि कभी एक बेस्ट होगा अगर डबल टॉप फॉर्म हो या ट्रिपल टॉप हो, ये तो बेस्ट ही बेस्ट है. तो मिनिमम आइदर डबल टॉप और आइदर अ लो हाई whenever there is a break and retest of anything. So similarly, नीचे का level, I hope it is clear कि why it's a demand zone, big rejection, 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 big rejections, big rejection and a big rejection. विक रिजेक्शंस में अगर जैसे नीचे वाले का देख रहे हैं हम लोग और उसमें ऊपर वाली विक ज्यादा बड़ी हुई तो वो भी विक रिजेक्शन में कंसिडर किया जाएगा. कोई भी विक रिजेक्शन होगा अगर उसका जो भी वो विक रिजेक्शन कौन ला रहा है. अभी इस पर्टिकुलर केस में विक रिजेक्शन किसने लाया? इस पर्टिकुलर केस बुल्स. बुल्स ने लाया. देन इस पर्टिकुलर केस में विक रिजेक्शन किसने लाया? यस. बेयर्स. इस पर्टिकुलर केस में विक रिजेक्शन किसने लाया? नहीं सर, जैसे जो पिछला वाला था उसमें जो बेयर्स ने विक रिजेक्शन लाया तो उसमें नीचे ये भी तो वाला विक है. ये वाला ना, यस सर, इसमें नीचे साइड पे भी तो विक है. ये वाला भी है. यस सर. तो यही हाँ, मतलब देख, तो ये मतलब वाला भी एक विक रिजेक्शन, दिस वन स्ट्रॉन्ग. So what is your question now? Now see, now मतलब answer. Now मतलब हम इसको किस उसमें देखेंगे, मतलब बाय बुल्स में देखेंगे या बेयर्स में देखेंगे? obviously we are हाँ, good question. ठीक है. So for that we are going to obviously see for is a candle is red or a green. So obviously ये एक wick rejection है, but ये green candle है, spinning top है, हमें इससे मतलब नहीं है. What we want is only one side का wick rejection. So इसमें one side का wick rejection है क्या? इसमें नहीं है. यहाँ पे दोनों साइड से wick rejection है, right? मतलब ये Yes, sir. अगेन क्या हो गया? इंडिसीजन हो गया. इस पर्टिकुलर केस में ऊपर की तरफ विक रिजेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है जितना नीचे की तरफ है. मतलब इस पर्टिकुलर लेवल पे बायर्स अवेलेबल है. मेक सेंस? Okay, sir. इफ ये एक प्रॉपर विक रिजेक्शन है, मतलब क्या हुआ है कि इस लेवल पे बायर्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए यहाँ Yes, से sir. क्या हुआ है, प्राइस बायर्स एंटर्ड एंड पुश द प्राइस अहेड.
So whenever the price, suppose now another thing, suppose the price comes and forms a bullish engulfing. Are we gonna trade here? Place a buy here. Okay, one I'm clearing out one thing कि entry कहाँ होगी, stop loss कहाँ होगा and target कहाँ होगा. Guys, you want this thing right now or should we cover it up later only? सर स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. जैसा हाँ, आपको सही step by लगे। step step होगा इसलिए. Entry will be always at the close or the high or the low of the CS. Guys, clearing this thing. So suppose for example ये bearish pin bar का हम sell कहाँ लेते हैं, तो entry हमारी यहाँ पे होती है. ओके, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ. ओके, एंड टारगेट विल बी always 1:1.5 minimum. We will be never having 1:1. Yes, you can do 1:1. वो कब होगा, कैसे होगा, जब काउंटर ट्रेड्स लेंगे तब 1:1 लेना है. बट इस पर्टिकुलर केस में आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि एंट्री एग्जिट कहाँ होनी चाहिए. बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. सो वेयर विल बी आवर एंट्री इन दिस केस? एनी आंसर्स? एनी आंसर? वेयर सर बी High of the जस्ट green से candle. बुल्स के हायर पे। हाई या क्लोज पे? हाई। ओके, तुम हाई में जा रहे हो, नॉट अ प्रॉब्लम. अक्षय, तुम कहाँ जाओगे, क्लोज या हाई? My recommendation would be go for close. You will have a proper risk to reward playing in coming into the play. So we will be having our entry at the close. And यहाँ पे अपना stop loss कहाँ पे होगा? लोअर ऑफ लो, कंप्लीट लो पे। यहाँ यहाँ यस पे सर। लो के लो पे. नीचे, क्लोज के ओपन के नीचे नहीं, लो के नीचे. ठीक है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हो गया. एंड आवर टारगेट विल बी इसके रेंज का. ये क्या रेंज है, सपोज 5 रुपीज रेंज है और अपन सपोज 1:2 के टारगेट में जा रहे हैं, तो रेंज क्या होगा, तो टारगेट कितना होगा, 10. तो कहीं पे भी जहाँ पे आपको, दिस इज इट. यही है रॉकेट साइंस एंट्री एंड स्टॉप लॉस के पीछे. कितने लोग पूछते हैं एंट्री कहाँ लूं, स्टॉप लॉस कहाँ लूं. दिस इज इट. वाज इट रियली दैट डिफिकल्ट एज यू माइट हैव थॉट इट, और एनीबडी हैड एनी? अच्छा चिराग, तुम कौन से एंट्री सेटअप तुम्हारा कैसा था? आई वांट टू नो, आई वांट टू सी. चिराग, मैं जब भी मतलब टेक्निकल इंडिकेटर पे जो किया था वैसा उसमें मतलब मेरे अभी तक जितने ट्रेड थे सब टेक्निकल इंडिकेटर्स पे बेस्ड थे, मतलब ऐसा प्राइस एक्शन बेस्ड नहीं था ट्रेड. तो मेरा एंट्री वुड ऑलवेज बी 3 इंडिकेटर्स पे मैं करता था, ईएमए क्रॉस ओवर, 5 13 26 और मैकडी और आरएसआई. तो अगर ईएमए क्रॉस ओवर हो रहा है, मैकडी पॉजिटिव है और मैकडी भी क्रॉस ओवर हो रहा है, और आरएसआई इज बिटवीन 60 टू इज जस्ट क्रॉसिंग ओवर 60, और मैं रुकता था, मतलब 60 जस्ट इमीडिएटली क्रॉस होने, तो 60 के ऊपर थोड़ा सा जाने के बाद, हाँ 60 के ऊपर जा रहा है तो आई वुड तब भी बाय करता था. पर 60 में तो ओवरबॉट होता है ना, या 80 में होता है ओवरबॉट? 80 में होता है. 70 टू 80 ओवरबॉट. हाँ ओके 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 फाइन. सो एंट्री फिर भी तो क्या उस बेसिस पे थी क्या, कैंडलस्टिक्स यू weren't considering? नहीं, मैं क्रॉस ओवर होता था तो आई वुड जस्ट एक नॉर्मल लो वाला लो ऑर्डर लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देता था. आई थिंक कि हाँ इतना लिमिट ऑर्डर है अभी, तो उसके हिसाब से. Oh God, so you never saw candlestick setups for the entry? नहीं, एंट्री के लिए इसके हिसाब से नहीं, बिकॉज मेरा अभी का जो ट्रेड था दैट वर नॉट एग्जैक्टली कंप्लीटली इंट्राडे. तो मतलब फॉर सेफ साइड ये तीनों इंडिकेटर्स पॉजिटिव देने के बाद आई वुड कीप देम इधर बीटीएसटी और फॉर लाइक थोड़ा सा पोजिशन 1-2 दिन के लिए ऐसा. अच्छा अच्छा तो अच्छा, ओके फाइन. जैसे मतलब ये एक्सट्रीमली सेफ ट्रेड जो होता है वैसे करता था मैं अभी तक, कंजर्वेटिव टाइप. एंड बहुत स्टॉप ज्यादा. लॉसेस कहाँ होता और स्टॉप लॉस स्टॉप कहाँ लॉसेस होता था फिर? में बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से दो ओ दो गॉड, ध्यान में रखता था. अगर लास्ट क्लोज के पास अगर है तो लास्ट यस्टरडेज क्लोज मेरा स्टॉप लॉस का होता था, और अगर एक कोई स्ट्रॉन्ग है सपोर्ट उसका पास में, बट रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से देखता था मैं कि मेरा ऑफ कोर्स
ऐसा लग रहा है मुझे कि अब इमीडिएटली वन वन जितना मैं डिसाइड करता था कि ये ट्रेड के लिए मेरा है कि आज ट्रेड है तो 500 से ज्यादा लॉस नहीं करवाना है, तो मैं जब भी ट्रेड करता था तो मैं डिवाइड करता था उस हिसाब से, अगर कि इसके नीचे आ गया और सपोर्ट के भी मतलब नीचे जा रहा है तो फिर मैं वो ट्रेड ही नहीं लेता था। अगर सपोर्ट के पास है और अगर उतना मैं लॉस सहन कर सकता हूँ पर ट्रेड तो मैं उस हिसाब से ट्रेड लेता था वो। Oh God, so means your stop loss अगर सपोज इस केस में सपोज यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है, हाँ so you are going to enter here, your stop loss is gonna be here, and then the हाँ target wherever it is. या So you to risk this much? नॉट एग्जैक्टली, मतलब वो बहुत ज्यादा ये नहीं था। मैंने जैसे एग्जांपल बताया था, मैं टेकेम का जब भी हुआ था, जब भी 503 का टेकेम हुआ था, तो मैं उसको मतलब थोड़ा एक वीक ऑब्जर्व किया कि जो वो उसका 500 लेवल्स का जो बाई है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और उसका 502 के अराउंड उसका क्रॉसओवर हो रहा था, आरएसआई स्ट्रांग दिख रहा था, और उसका मैकडी भी पॉजिटिव में जा रहा था, मतलब क्रॉस ओवर कर रहा था। तो मैंने वो टाइम पे एंटर किया बिकॉज आई न्यू 502 पे मैं एंटर करूंगा तो मेरा मैक्स टू मैक्स मेरे को 3 to 4 पॉइंट्स में ही उसका ये था, सपोर्ट था, हेवी सपोर्ट, बाइंग सपोर्ट था, उसके नीचे नहीं जा रहा था वो। तो मैंने वो टाइम पे एंट्री किया एंड उसको मैंने फिर पॉजिटिव के टाइम पे जितना अच्छा खासा ऊपर जा रहा है उतना जाने दिया मैंने। तो वो मैंने Oh फिर बाद में God. अराउंड 526 समथिंग समथिंग पे अराउंड 2-3 डेज बाद सेल किया था मैंने वो मेरा पहला ट्रेड था, बहुत एक्सट्रीमली सेफ ट्रेड था वो। And somebody else, Jay, what was your entry conditions before this? Any सर insights on वो ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा हूँ, पुलबैक्स तो अभी तक ट्रेड किया नहीं है, ब्रेकआउट ही ट्रेड कर रहा हूँ। लाइक कोई कंसोलिडेशन पैटर्न के बाद ब्रेकआउट होता है तो विद वॉल्यूम कंफर्मेशन लेके टेस्ट करता था। Yeah, it works then, not a problem. But फिर एंट्री कहाँ होती थी, कैंडलस्टिक्स के बेसिस पे या? हाँ, लाइक जो भी पैटर्न मेरा बन रहा है तो उसके हिसाब से जो भी लेवल आ रहा है, जब वो लेवल विद वॉल्यूम क्रॉस करेगा और कैंडल क्लोज होएगी उसके बाद, कैंडल अगर ओके, बुलिश क्लोज हुई है तो उसके बाद है। तो कैंडल बुलिश क्लोज हुई तो क्लोज पे तुम्हारा बाइंग था एंट्री? नहीं, प्रेफरेबली मैं मतलब लेवल पे करता हूँ। जैसे लेट्स से अगर कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी क्लोज हुई है तो फिर मैं उसमें एंट्री लेता हूँ, अगर मेरे लेवल के पास वो रीटेस्ट कर रहा है तो मैं लूंगा। ओके, एंड देन स्टॉप लॉस, वो जो ब्रेक स्टॉप लेवल है लॉस उसके नीचे? ट्रांसफर, हाँ मतलब स्टॉप लॉस या तो जस्ट अगर हॉरिजॉन्टल लेवल है तो हॉरिजॉन्टल लेवल के जस्ट नीचे या ऊपर जहाँ भी, और लेट्स से अगर कोई पैटर्न है तो फिर 1 मिनट के चार्ट पे जो स्ट्रक्चरल लेवल्स निकल के आते हैं उसमें जहाँ पे रिजेक्शन दिखता है उसके पास। ओके, एंड आशीष, व्हाट वाज योर एंट्री कंडीशंस? सर मैं वो एडीएक्स यूज करता था एंट्री के लिए, अच्छा, डायरेक्ट एडीएक्स वो एंट्री। वोलेटिलिटी वाला, हाँ हाँ हाँ। 14 को क्रॉस तो करता है ये? जो हाँ हाँ क्रॉस करने के बाद एंट्री लेता था, और अच्छा, हाँ और ट्रायंगल भी यूज करता था एंट्री के लिए, जस्ट तो ट्रायंगल क्रॉस होता ब्रेकआउट। तो जस्ट वो सपोज वो एडीएक्स ऐसा दिखा दिया तो यू यूज्ड टू जस्ट बाय द हाँ बटन एंड यस। कैंडल्स नहीं देखते थे फिर तब? नहीं नहीं सर। ओ गॉड, एंड देन स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस सर मतलब इतना परफेक्ट नहीं, लगा देता था नीचे जितना रिस्क उठा सकता हूँ। ओके ओके ओके, फाइन, ठीक है, सो नॉट अ प्रॉब्लम, विल बी कवरिंग इट अ पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम आल्सो, कैसे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है, कैसे क्या है, नॉट अ प्रॉब्लम। सो आई होप द एंट्री स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऐसा ही होगा, ऑन द बेसिस ऑफ कैंडलस्टिक्स ओनली। We need as tight stop loss as possible. Okay, guys, and you will see it works wonders. This is enough. अगर आपको और थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेड लेना है, तुम लो के थोड़े पॉइंट्स नीचे भी स्टॉप लॉस डाल सकते हो, but this is gonna be our entry conditions for our entire life. Just change all the things, you guys. I don't mean to offend you guys. I won't say it's wrong, right? But I'm just saying what I have observed in my experiences. So your entry condition and your trade setup is going to be based on candlestick setups. Okay, guys. I hope I'm clear. But So if you uh, यस it is Mhm. not always necessary that we are not going to find these specific candlesticks, right? it मतलब is हमेशा it तो is ये नहीं दिखना चाहिए। 108%, it is 108% clear you will find these candlesticks. I am Okay. a complete ये ट्रेडर, मेरा रोजी रोटी बनने के लिए मुझे दिन का एक ट्रेड तो लेना पड़ेगा, Yes, sir. right? So I take 3 trades minimum a day.
I won't say that I earn so much that I'm independent yet, but yes, even I'm in a learning process. Even I'm good enough to, yes, have trust and faith in my trade setup. And yes, these candlesticks do appear, guys. There is a reason why these candlesticks occur. Okay. ओके सर. So yes, though अब सर you एक और guys. चीज, एक Mm-hmm. सर Mm-hmm. ये ऊपर वाले चार्ट में एक बेरिश पिन बार ग्रीन कलर का बन रहा है बीच Green में. color, bearish pin bar, इधर नहीं सर, green लेफ्ट color साइड, हाँ. लेफ्ट साइड, लेफ्ट Left, रेड के. यहाँ, नो सर, थोड़ा सा राइट, right. राइट, 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 Top बोल देना. राइट, नीचे नीचे, राइट और नीचे, 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 ये राइट. ये ना, ये सर, यस सर. ये हमें कंसिडर ही नहीं करना है. फॉरगेट दिस. हमें सिर्फ बेरिश एंगल्फिंग से मतलब है. मैंने क्या बोला? हमें सिर्फ किससे मतलब है यार? जस्ट सेकंड. हमें सिर्फ बेरिश पिन बार्स में सिर्फ, यार दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. जस्ट अ सेकंड. सो या हमें सिर्फ, आई होप ये, हाँ ओके. सो हमें सिर्फ बेरिश पिन बार से मतलब है सेलिंग के लिए. We don't have to consider this as a pin bar at all. So if we are looking for sells, then this pin bar, or else larger wick and little body with some this, or bigger with little, just a bit this, right? For example, this example, then this example, then this is classic, this is my favorite. When it's not a pin bar, but it's a very classic candlestick setup. Then, so the only three types of pin bars which you guys are gonna have in your system. And in case of buyers, so iska ulta. So ulta kya hoga? This, or else, okay. ग्रीन कलर है, सबका ग्रीन कलर है हाँ यहाँ पे, यस सर. और यहाँ पे रेड कलर है. सी हम कर सकते हैं अलग अलग, बट स्टार्टिंग में वी वांट टू सी आवर ट्रेड्स गोइंग राइट. सो इंस्टेड ऑफ ओवर ट्रेडिंग, सी हमें हमारे पास 150 एन एफ एन ओ स्क्रिप्ट्स है. 150. सो हमें ओवर ट्रेड या वैसे चीज करने की नेसेसिटी नहीं है. सो वी विल बी ऑलवेज वेटिंग फॉर सच पैटर्न्स टू फॉर्म. We are never gonna trade such pin bars, this level of bearish pin bar. But that was a good thing. Yeah, अच्छा हुआ you asked that question. It cleared it out few things. So इसी candlesticks, इसी setup में bullish bullish pin bars के example is this one, is this one, is this one. Then what we have, this one, this one. See, ये वाला strong नहीं है, but yeah can be considered. ये weak है, समझ गया अभी? ये यस सर. क्लासिक ब्यूटी है ये. ठीक है, ओके तो सर. यहाँ तक समझ, यहाँ तक कोई डाउट? सो इसी केस में एक और सप्लाई जोन वाज दिस, कवरिंग इट अप, विक्स 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 विक्स. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. लेट्स सी व्हाट वी हैव. एनी डाउट्स यहाँ तक गाइस? Hello. नो सर. No, Yeah, not. sir, I have a doubt. ओके, हु क्या नाम है यहाँ पे दिखा Sir, है? Tanmay. Tanmay. तन्मय, यहाँ पूछो ना यार. Yep. गो अहेड. So in the last picture, you created a new supply zone in here. So sir, ओके. like in the last, it got a breakthrough. It moved above the supply zone. या Yeah. So sir, how will we identify when will it break through and when will it not? Like, the only two things, as I said, the only two things which can happen is the break, retest, and moving upwards, or this, right? yes sir. So
when the price was near this level. Just a second. The price. Okay, cool. Yes, sir. So see, यहाँ पे एक दो चीजें क्या कंसिडरेशन में ले सकते हैं. पहला है कि यहाँ पे काफी ज्यादा बाइंग एक्टिविटी है. इस लेवल को बहुत अच्छे से प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है. काफी ज्यादा बिग रिजेक्शन है. इस प्राइस के नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा. ऊपर से ये भी एक लेवल है जिसके ऊपर what sorry. सो यहाँ पे यही हो रहा है कि इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर भी प्राइस जा नहीं रहा है. ये Yes, sir. बनते जा रहा है, ऐसे बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, राइट. सो Yes, sir. व्हाट हैज हैपेंड, एक ये स्ट्रॉन्ग क्या है, पिन बार है. बुलिश पिन बार हायर टाइम फ्रेम वाली इतनी स्ट्रॉन्ग है. ये तो हम देखते नहीं है, बट जस्ट एन एग्जांपल. व्हाट हैज हैपेंड, हायर हाइज आर फॉर्मिंग, हायर हाइज, हायर लोज, राइट. ये Yes, लेवल sir. को ब्रेक किया, रिसेंट हाई लो को नहीं. मतलब क्या है यहाँ पे, ये एक मॉर्निंग स्टार है. तो इंडिकेशन क्या है कि भाई बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो इसका मतलब क्या है, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग पुश. आफ्टर a strong push, if you have to sell and the price comes near the level, what we wait for is a either a Wait. double top Or a or break. a double or a higher low. As simple as Okay. that. So we get a double top here? We didn't. Did the price reject sharply and went down? It didn't go down. Did it come up? It didn't come up also. What did happen? It just broke up, right? Yes, sir. Doubt clear, Tanmay? Yes, sir. पक्का? सर मतलब Yes, sir. अगर हाँ, sir. डबल टॉप और हायर लो नहीं बना तो वी शुड टेक अ लॉन्ग पोजीशन, राइट? Only when this level breaks ओके सर. and the retest happens. That's it. अच्छा, तो Okay. इस केस So में रीटेस्ट तो आया ही नहीं सर. तो नहीं आया, नहीं आया, जस्ट नहीं आया. So we don't have to be sad and think about oh shit यार retest नहीं आया. नहीं तो There is मतलब इस केस में हम ट्रेड नहीं लेंगे ना, राइट? नहीं, ये ट्रेड में फिर इस ट्रेड में आई डोंट थिंक ट्रेड लेते. बट एज आई सेड कि दिस इज अ 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट गाइस. ओके. ठीक है. सो इफ वी गो ऑन, बट आई डोंट थिंक यहाँ पे ट्रेड मिलता, क्योंकि ये डायरेक्ट 15 मिनट्स की ये नीचे की आया है, 3-4 मिनट्स की गैप फिलिंग आई है, देन ऊपर पुश हुआ है. सो नहीं, यहाँ पे कोई बाइंग नहीं आई थी बिकॉज इट वाज सो स्ट्रांग दैट द प्राइस ब्रोक अप. बट इफ दिस प्राइस कम्स अहेड इन फ्यूचर, यहाँ के आसपास आता है, देन एक रीटेस्ट करके ऊपर जा सकता है इस लेवल के. ओके सर. ओके. सो आई होप इतना क्लियर है यहाँ तक. यहाँ तक वी आर Yes, sir. क्लियर. ओके. यस सर. सो मूविंग ऑन. Pictures. Why zones are important? So zones are least used by Indian traders today, but extensively used by institutional banks and global successful forex traders. Zones are important because when the price approaches near the zone, as there are opportunities because the market participants are present, possible trades and winning trades can be traded. I've said that already. What are confluences? So confluences are factors which successful trader take into account. I have already mentioned, like analyzing candlestick patterns, where the candlesticks patterns has formed, is it at an ESR, at what structure level it is at, like for example zone, or what higher lows, higher highs are forming, is there a double top, what are the candlestick setups saying to me, previous candlesticks telling to me, or is there proper wick rejections prior to what candlestick setups has formed. All these comes under confluences. Are we clear? So how to यस सर. use the confluences to take the trade? The number of confluences are directly proportional to the chances of your prediction to go correct. The goal is to win the trades, and to win higher number of trades, we need as many confluences as possible to support our bet on a trade. So this is how successful trader takes count in confluences before executing a trade. So we have half an hour left. Let's get back to the TradingView platform and find good proper zones, right? So this is a random chart which I have opened of Euro USD. ठीक है, not a problem. सब हर जगह ये सब चीजें सेम होती है. All capital markets. So you guys want me to search a stock any stock, or this works? हाँ सर, इक्विटी में दिखा.
इक्विटी में करूँ ना, ठीक है। सो कौन सा स्क्रिप्ट, एनी स्क्रिप्ट यू गाइस चूज, योर चॉइस। मैं वो बिलीव नहीं रखता कि कौन सा, तो यू गाइस ओनली टेल व्हिच स्क्रिप्ट टू फाइंड, बस प्रैक्टिस ही तो करना है। So Tata Consumer. टाटा कंज्यूमर्स, ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, ठीक है, ओके फाइन, टाटा कंज्यूमर्स, राइट, यही है क्या? क्योंकि मुझे स्टॉक नहीं पता है कभी। Yes, ठीक sir. है, Yes, sir. okay, so on which time frame we are gonna see the zones, any guesses? 15 minutes. हाँ, 15 minutes. lot of noise on 15 minutes bro, फिर भी which zones to select, on what time frame, 1 hour or more than 1 hour, okay, Okay. okay, just a sec, excuse me. Okay, so this is a chart of, I guess, whose choice was this, Tanmay or Ashish or Sir, Chirag? Yes, sir. Tanmay, okay, Yes, sir. so you guys only tell me, prices तो यहाँ पे है ही, कौन से zones यहाँ पे बन सकते, see the stock is in a very good uptrend bro, thanks for this pick, okay, so just tell me कि यहाँ पे कौन से level, कौन से prices तो यहाँ पे लिखे हैं, कौन से level के आसपास zones बन सकता है, any guesses, just random, supply demand zone जो भी है just बता देना कि supply zone ये है, demand zone ये है। ये तो परफेक्ट डाउ थ्योरी का एग्जांपल चल रहा है अपना, पुरु, देखो ये Yes, sir. परफेक्ट में है, परफेक्ट, what is happening just before getting to zones, guys, just bear with me, see this classic trend, man, crazy, very good, nice pick, thanks for this, huh? So yeah, so anybody has any clues, guys, you only answer यार, कहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे कौन से जोन्स बन सकते हैं 1 hour पे, let's go to 2 hours, 3 hours, so 3 hours बहुत कम है, 1 hour 80, 1 hour, any guesses guys, please ना आंसर ना कोई, तो तन्मय you only go यार, तुम्हारा पिक है, Yes, sir. जोन कहाँ पे बन सकता है, So मैं भी around 364 maybe. 64, क्यों 364, any principles behind your decision? Yeah. So like after 11 it touched the wing, then at around 16 or 17 it touched, then around 21 it touched again. Like after it went up, but three Mm-hmm. supply zones, and one at before just May, I no, it was a little less. It was around 362. So, but yeah, due to these three supply zones. Okay, but one question to you, ये लेवल पे Yes, विक sir. रिजेक्शन है क्या? Uh, so not big of big generation, but yeah, in two places I little bit. विक रिजेक्शन है या नहीं है? So not exactly big, no, not है exactly. So, है है, so okay. yes, this is a zone, good, So zoom this out करना is, please. Wick zoom out rejection करूँ, का. ऊपर करूँ, zoom in करूँ या zoom out करूँ? Zoom in, sir. Zoom in. zoom in, okay, दिख रहा है अभी यहाँ पे, Yes, sir. see this, wick rejections, wick rejections, wick rejections, wick rejections, wick rejections and particular activity, break fake out हुआ है, not a problem, थोड़ा सा weak है ये, fake out हुआ है, but हाँ, but इस particular script के current market price के आसपास, yes, this is a zone, यहाँ पे एक rejection आया है, so are you understanding the level of activity which has happened here, guys? Activity, activity, activity here also, activity here also, activity, activity, not a good activity, but ठीक है, इतने सारे activity है, इसको हम माफ कर सकते हैं, and एक और activity, make sense guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, this was a zone, so what can happen tomorrow at this price? Either the break and the retest and it travel downwards, or what else, price may come here and then Move up go up, again. just
this, or if the push जो ये है नीचे आने का, ये अगर weak है 5 minutes है 5 minutes will be our time frame, to be honest. ठीक है. So if the push is not strong, then what we are gonna, and a pen bar comes here, or a or any something else like bullish engulfing comes here, then we can take that trade. So let's see अगर यहाँ पे कुछ आसपास के लेवल पे कुछ बन सकता था क्या या नहीं. जैसे आज फॉर एग्जांपल, अब ये कल भी बना सकते थे, राइट? ये कल भी बना सकते थे, कल परसों. ठीक है. So what have we got here? So see, एक ये bullish pin bar है, but are we gonna trade such bullish pin bars? No. But see, just imagine the price came, it reacted, it went up. Perfect 1:2 setup, but no, that was not the perfect trade we could take. फिर यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे अच्छा ये कल का है. The price broke, and did it come to retest? Did it come to retest? Nope, it didn't come to retest. On 2nd June. On 1 June, what happened? See, what happened on 1 June was this break and a retest. So a retest has been done. There's no candlestick setup here really, but yes, there is a pin bar here. And the price came, and then okay. So यहाँ पे पर्सनली अगर मैं होता तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये जो पिन बार यहाँ पे फॉर्म हुआ है ना गाइस, हेलो, आर यू गाइस विथ मी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes. वो मुझे ये जोन पे मिलता तो ज्यादा मजा आता. ठीक है. सो दैट्स व्हाई. सो दैट वाज लाइक, मुझे बुरा लगा वहां पे जोन नहीं आया, बट नॉट अ प्रॉब्लम, हैपेंस. व्हाट वी हैव फॉर अदर टाइम्स. ओके. सो जब ये फेक आउट होता है, हाँ एक चीज मुझे क्लियर करना है, जब ये जोन बनता है, ठीक है, और जब ये प्राइस इसको ब्रेक करती है, ठीक है, सो जब इसको ब्रेक करती है और हमारा एस्टिमेशन ऊपर जाने का है ना, वी आर ऑलवेज गोना वेट फॉर दिस ब्रेक and then another retest. ठीक है. This is wizard level of price action which people use, guys. Whenever a fake out has happened before downwards and our bet is कि ऊपर जाएगा, so wait for this price to break this level, ठीक है, and come back and retest this. A pin bar will form, and then you will enter. For example, a classic example, it broke down, ठीक है, it broke above, and then what you have is, what do you have? What do you have? वापस टच कर रहा है. Bullish pin bar. What is this candle? Bullish pin bar. Bullish pin bar. Exactly. So प्लीज ये चीजें जो है, ये चीज अपने बुक में बना लो, ये बहुत विजर्ड लेवल है. I have spent a lot of time and years to notice this, but please just get the screenshot of this because it's very important. It's a lot of time. It will save you from losses. So see, उसके पहले क्या हुआ है guys? यहाँ पे around 11 o'clock on the same day. Okay, on the same day what happened? Price didn't touch here, and we are not gonna हम लोग छेड़छाड़ी नहीं करेंगे लेवल के आसपास. जहां लेवल है ना, उसको कभी नहीं छूना है उस दिन के लिए. ठीक है. अभी यहाँ पे काफी लोग करते हैं, ये क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस है ना, इसको ऊपर खींच देंगे, बट ये करना है क्या, हमें नहीं करना है. नो चीटिंग. जहां पे है लेवल वही रहने दो. एंड क्या हुआ है, प्राइस यहाँ पे आया, ये हुआ, प्राइस यहाँ पे आया, एंड व्हाट हैव वी गॉट हियर? Not a pin bar, but kind of a marubozu. Strong indication. Entry, SL, and take profit. But to be honest, this was also not a trade because the stop loss is huge. It is huge. Are you guys with me? Yes, sir. Yeah. Yeah. So any other from someone else? We have a lot of time. 10:15 को खत्म होगा. We have 11:15 को खत्म होगा. So any script, any random. Reliance. Reliance. Reliance Okay, my favorite. Okay, cool. बनाया हुआ रहेगा, मैंने पता नहीं. Yes. Okay, नहीं बनाया. Okay. Reliance में बहुत कचरा चल रहा है, but ठीक है, not a problem. Any other script, guys? This is just consolidating right now. Any other script? Any other?
anything I see. डॉक्टर रेड्डी ये चल डॉक्टर रेड्डी अच्छा है, चलो एटलीस्ट एफएनओ तो स्क्रिप्ट सारे सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके 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 कूल। ओके चलो स्क्रिप्ट है, आई कैन नॉट डिनाई, जो है चूज मुझे वो बनाना पड़ेगा। जस्ट गाइस प्राइस देखो साइड में, बताओ कहाँ पे जोन्स बन सकते हैं। सीएमपी के आसपास, करंट मार्केट प्राइस के आसपास। थोड़ा जूम इन करना। ओके जूम इन, टू आवर्स कर दूं, 2 आवर्स कर लो चलो। ओके ओके गाइस, गेट योर आईज ओपन एंड कौन से जोन्स कहाँ बन सकते हैं। अच्छा है, आई लाइक, मेरे को मिल गया है, ढूंढो चलो। मेरे 4080 पे। एनी आंसर्स फ्रॉम राज? राज इज नॉट आंसरिंग, आई गेस राज ने आंसर किया, पता भी नहीं। राज, एनी आंसर फ्रॉम यू ब्रो? तन्मय हैज आंसर्ड। अक्षय आज है ही नहीं शायद से हमारे साथ, उसने मेरे को व्हाट्सएप किया था। आशीष, एनी आंसर फ्रॉम यू ब्रो? एनी जोन? 4080 4080। 3840 4080 एक है, चलो ठीक है। और कौन सा बोला किसने? 3840 सर। 3840, ओके ठीक है। ओके सो नाइस, दिस, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके नाउ इट मेक्स सेंस, राइट? इट मेक्स सेंस नाउ एंड यस, जिसने भी ऊपर का कहा है ही इज परफेक्टली राइट। दिस इज अ जोन, दिस इज अ जोन, बट सीएमपी के आसपास एक और जोन है गाइस, वो गेस करो ना। थोड़ा सा मुश्किल है, इट विल कम विद एक्सपीरियंस, बट ट्राई टू प्लॉट इट। 1 मिनट, सीएमपी के आसपास है क्योंकि 2 आवर्स का चार्ट है गाइस, दिस प्राइस वहां तक आने बहुत। 4000। 4000, हाँ ये वही। एक लेवल किसी ने बनाया है, ठीक है। नाउ इसका मैं एक आर्गुमेंट दूंगा कि ये क्यों नहीं होगा प्रॉपर। कैन यू गाइस सी कि यहाँ पे प्राइस को अच्छे से रिस्पेक्ट किया है या नहीं किया है? किसने आंसर किया था ये? ही कैन ओनली थिंक एंड आफ्टर प्लॉटिंग द लेवल्स थिंक कि यहाँ पे इस लेवल का रिस्पेक्ट आया है क्या? ये जो जोन है या ये जो जोन है उसके रिस्पेक्ट में उतना रिस्पेक्ट आया है इस लेवल पे? नहीं। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा नॉइज है। ये देखो, ये यहाँ पे ऐसा अननेसेसरी कैंडल है, ये अननेसेसरी कैंडल है, ये अननेसेसरी कैंडल, ये अननेसेसरी है, राइट? सो इसके वजह से एज आई सेड जोन्स तो सारे मिलेंगे, बट व्हाट वी वांट टू सिलेक्ट, व्हिच जोन्स वी वांट टू सिलेक्ट द बेस्ट ones. Which ones? The best ones. So my zone for tomorrow, for this script could be this one. Make sense? Make sense, guys? Does my यस zone make sense? यस यस सर। यस। So ye, why were you weren't able to see this? See this level, na? See what is happening here? Clear rejection, break, test. What has happened? तो कल यहाँ पे आएगा तो ये second consider a buy. इसका break and retest हुआ तो ये second consider it to sell. Considering all the confluences like what? Candlestick setups, blah blah blah. Buy के लिए क्या confluences होगी? ये confluences होंगी. पूरा high highs बन रहा है, right? High lows बन रहे हैं. Any other script? Any example? Guys, any other script we have? Any आईटीसी। example? I don't read that, but ठीक है, फालतू स्क्रिप्ट है वो, सब इंट्राडे के लिए नहीं करेंगे हम, but ठीक है चलो, हमारा चॉइस है, करना पड़ेगा। Not bad, not bad. But guys, we won't trade ITC for intraday, huh? Never. रखना ही नहीं है वॉच लिस्ट में। ऐसा एनी रीजन, मतलब ऐसा कैसे सिलेक्ट करते Any हैं? reason? Um,
just कि वो it's we have other scripts, good scripts, इसमें हाँ वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है, I do agree, but it I have not seen ITC respecting levels properly, क्योंकि ये ना सारे बहुत इन्वेस्टर्स लोग होते हैं, इसमें टेक्निकल एनालिसिस बहुत कम, टेक्निकल ट्रेडर्स बहुत कम क्या बोलते हैं पार्टिसिपेट करते हैं आईटीसी में. आईटीसी में मोस्टली आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स according to makes me. sense. I might be wrong. So yes, which levels which zones we have here in ITC on whatever chart we see, ये जो भी चल रहा है इसमें कितने levels मिल रहे हैं हमें? एक ही होगा. Yes. एंड दूसरा अगर है तो नहीं, यहाँ पे कोई लेवल्स है, जबरदस्ती बनाना है तो बन जाएंगे, पर जबरदस्ती बनाना है क्या? नहीं. हाँ सर अगर 15 मिनट्स में जाओगे ना, सो आई टेल यू यहाँ पे बहुत अच्छे इंट्राडे जोन्स मिल सकते हैं. सो सी अभी तुम देखोगे तो दिस इज रियली गुड, दिस वन. ये अच्छे सर से इंट्राडे के लिए कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना है? 15 मिनट या 5 मिनट? जिनको स्टॉक्स करने हैं वो लोग 5 मिनट्स देखो, जो जोन बनाया था वही मस्त है प्रॉपर. ठीक है, इंट्राडे के लिए 5 मिनट्स गाइस, ठीक है, स्टॉक्स के लिए. और जो इंडेक्स कर रहे हैं तो इंडेक्स वालों के लिए निफ्टी 3 मिनट्स एंड 5 मिनट्स दोनों. ओके Yes. ओके 5 मिनट्स एंड 5 मिनट्स 10 मिनट्स, और सी 10 मिनट्स भी करते हैं लोग, नॉट अ प्रॉब्लम. 5 मिनट्स भी चलेगा, 10 मिनट्स भी चलेगा एंड 15 मिनट्स भी चलेगा. 15 मिनट्स में मजा नहीं आएगा क्योंकि जल्दी दिन खत्म हो जाएगा और उतना पेशेंस अपने में नहीं है. मेरे में भी आज नहीं है 15 मिनट तक पोजीशन होल्ड हाँ करके रखो. सही है. ठीक है, तो बहुत पेशेंस लगता है भाई उस चीज के लिए. इट कम्स विद एक्सपीरियंस एंड टाइम, एंड 15 मिनट्स इज जस्ट नॉट रियली इनफ. ठीक है, 5 मिनट्स ठीक है, बहुत अच्छा है. सो एनी अदर स्क्रिप्ट, लेट्स गो फॉर दिस और बीपीसीएल. सर जोन बीपीसीएल 1 आवर में मार्क करने हैं ना? हाँ 1 आवर में, 1 एंड मोर आवर्स, 1 और मोर. सो गाइस ये बीपीसीएल का मैंने खोला है. बीपीसीएल में कैन यू गाइस प्लीज मार्क द जोन? कैन यू गाइस मार्क द जोन्स ऑन बीपीसीएल? प्राइस लेवल साइड में दिख रही है. any doubt, any minor major? माइनर भी चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम. अराउंड 340 to 345 ये किसने आंसर किया है? गुरु सर ओके अक्षय तो नहीं है. तन्मय, योर आंसर? Yes, sir, around 345 to 350, I see. ओके राज, Seems correct. what about you? चिराग? It's saying नियर मार्केट प्राइस तो वही है. और एक सर क्या सीएमपी तो यहाँ पे है 347.90. हाँ उसके नीचे. यस थोड़ा सा नीचे वाला, थोड़ा नीचे 340, थोड़ा सा नीचे. हाँ और थोड़ा, हाँ वो वाला. यस ओके this can be. Yes, it can be. Yes, so yes, this one makes sense for me. And also जिसने 340 बोला था, जो भी, that also makes sense, but यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है. I guess why चिराग ने आंसर किया है क्योंकि उसने ये देखा. definitely उसने ये देखा है, right? ये देखा ना यस चिराग? वो. एंड करंट भी उसके पास ही सपोर्ट ले रहा है नियर बाय. हाँ, और यहाँ पे सपोर्ट लिया है. सही है ना? हाँ. यस. So yes, can be considered. तो मैंने भी ये बीपीसीएल में मेरा क्या लेवल था कल के लिए? वेट, my level was 346.3. Let's mark 346.3. So yes, my level was also near Chirag's level. Good, nice one. Any other pick for tomorrow? Any other script you guys wanna see? We have time, yaar, because then और 15 मिनट है. Let's do practice more of. एक सेकंड. डीमार्ट सर, कौन सी डीमार्ट. script हो? कौन सा? डीमार्ट वाला. डीमार्ट? हाँ
हाँ यही है गेस डीमार्ट, क्योंकि मैं डीमार्ट भी हाँ देखता नहीं। डीमार्ट हाँ मत यही करो, क्यों? देखो ये सब होता है, देखो ये एनी अदर स्क्रिप्ट ये सब होता है। ये क्या है ये सब? नॉट प्रॉपर। एनी अदर स्क्रिप्ट ये क्या है? देखो ना ये सब नोटिस कर रहे हो guys? ये क्या है ये सब? सॉल्व ये, राइट? वी डोंट वांट सच एनी अदर गुड स्क्रिप्ट गाइस। कोई अच्छा, कोई नोन, कोई बैंक बोलो यार, कोई बैंक। एक किसी ने एक बैंक नहीं बोला है। बैंक, कोई तो बैंक खोलो खोलो, बैंक की कोई भी बैंक उठाओ, चलो। ICICI। ये ठीक है, ये तो मेरा हर बार, ये मेरा फेवरेट ये है। ये हर ICICI। देखो इस दिन के पहले तक कितने अच्छे से लेवल पे रिस्पेक्ट किया नहीं स्क्रिप्ट ने, तो ठीक है। गाइस मार्क, बताओ कौन से लेवल पे? जस्ट फॉरगेट CMP, जस्ट मार्क द लेवल्स टुडे ऑन दिस वन। हाँ अभी समझ आएगा, जस्ट अ सेकंड वेट। ये थोड़ा सा इधर खींचता हूँ मैं। हाँ अब बताओ, राइट साइड में दिख रही है? बता सकते हो? बिग रिजेक्शन देखनी है, फिर ब्रेकआउट रिटेस्ट देखना है, रिवर्सल देखना है, बाउंसिंग देखना है, मेजरली बिग रिजेक्शन देखना है। आवर लीडर फिर अराउंड 335 3 35 335। नेक्स्ट सर 320। 350 के 350 के आसपास। 350 के आसपास। ओके नेक्स्ट। सर 320 के आसपास है, 320। नेक्स्ट। ओके चलो ठीक है, 3 के 3 बहुत हो। पुरु ने आंसर किया क्या? यस सर 350। So let's mark the levels. Price. Okay. Okay. Nice. Nice. इसको extrapolate करोगे तो okay. Makes sense. Um. Okay. Makes sense. This also make. DK है क्या साथ में? DK? Are you there? हाँ सर। समझ रहा है क्या यहाँ तक? सब बाउंसर जा रहा है। सर सब बाउंसर जा रहा है अभी तो। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तेरे लिए वापस से करेंगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके सर। ये सब चीजें समझ पढ़ सुन तो रहे हो ना? क्योंकि हाँ सेकंड टाइम ना, तो हाँ तुमको अपन सबसे अपने साथ 7 पीपल है, सबसे ज्यादा तुमको समझ आएगा। विल बी अटेंडिंग इट हाँ सेकंड टाइम लाइव वो भी, ठीक है? हाँ सर। यस सर। तो ध्यान देना, बट क्या बोल रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, जस्ट पे अटेंशन, ठीक है? ओके तो सर। so yes guys, this is right, perfect. This was my level for yesterday, but price ऊपर ही gap up हुआ, but yes this was very good. I'm really happy for whoever who has selected this. I'm happy for this one also. It makes sense because price अगर इसको consider नहीं करे 21 को, तो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे बार ब्रेकआउट हुआ है, फिर रिटेस्ट या ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट अगेन, एंड यहाँ पे एक रिजेक्शन है और यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है. सो यस, all these zones makes sense, but the best one is this one. Whoever has answered it, congratulations. Next script. Next script quickly. SBI। अभी सब बैंक से उठाएंगे ना? बहुत गिरा था ये. ओह वाओ, वाओ, मिल गया मेरे को. बताओ चलो, which levels we have for on SBI zones? मिल गया, मुझे मिल गया. हाँ 170 180 के अराउंड। सब 180 115 और 117 170 169 one by one. 170. 170 Next. 170 सब 170 Next. 169
हाँ 180 170 जी 172 के थोड़ा सा रेंज में 172 अराउंड 172 171 170 पकड़ लो उसको। और कोई है? 180 के आसपास है सर, 180 के अबव। 180 180 भी चलो पकड़ लेते हैं। और कोई? नहीं, इतने ही चलते। लेट्स सी। ओके। हाँ, क्लासिक। Very nice. 180 was also nice, and 170 so nice. Very good, everybody. Next script. Next script. Come on. Glenmark. One second. I will like to just add, correct this. थोड़ा इसके आसपास होगा, right? ऐसे Yes. होगा। Okay? तो ये वही आसपास है, but हाँ, this is appropriate one. This was also a zone, guys, but notice कि यहाँ पे बहुत ज्यादा noise है, right? So ये and ये बहुत ज्यादा noise. यहाँ पे मतलब बहुत नॉइज ज्यादा आप किसको कंसिडर कर रहे हैं? noise मतलब consolidation. ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इरिटेशन, इरिटेटिंग। ठीक है? डोंट यू थिंक दिस मूवमेंट जो बॉक्स बनाया मैंने वो इरिटेटिंग है देखने के लिए? फिर उसको अगर एज अ सपोर्ट भी कंसिडर कर सकते हैं, मतलब ये नीचे वाले एरिया कौन को। से वाला? प्राइस 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 इस लेवल को ना? नहीं, जो उसमें आपने बॉक्स बनाया था उसमें नीचे वाला जो लाइन था। ये वाला? यस सर, इसमें वो पिन ये बार मतलब पे, एक। ये वाला ना? यस सर। हाँ, कंसिडर कर सकते हो, क्यों नहीं। देखो, उसको कंसिडर करते, उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते इस पर्टिकुलर वीक के लिए। ठीक है? इस पर्टिकुलर वीक के लिए देख रहे हो ना ये? यस सर। यस सर। इस पर्टिकुलर वीक के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते तो उस दिन ट्रेड में मिल जाता। कल नहीं, कब का ये? 2 जून। देखो, ब्रेक हुआ है, प्रॉपर रीटेस्ट हुआ है, राइट? सो ये थोड़ा सा, that was good. So this also made sense. 171.20 also made sense. But the classic one remains 180. Next script, come on. Glenmark. Alembic Denmark में कौन सा? Glenmark. GLEN. मैं फार्मा स्टूडेंट ही था। ओके, ये लेट्स इग्नोर दिस। इट्स इन अ, देखो ये सारा मेरा प्रैक्टिस है, जो साइड में दिख रहा है ना, ऑल इज माय प्रैक्टिस। नेक्स्ट स्क्रिप्ट गाइस, बिकॉज इट्स इन वेरी गुड ट्रेंड। वन डेली पे जाना पड़ेगा, आवरली पे कुछ नहीं दिख रहा है। आवरली पे आर वी सीइंग एनीथिंग? वी आर सीइंग, लाइक फॉर एग्जांपल दिस, राइट? बट हमें सीएमपी के आसपास चाहिए, राइट? Yes, sir. सीएमपी के आसपास नहीं है। सो कोई और, एनी अदर Alembic सम, व्हिच वन? बायोकॉन। NCC. हाँ Biocon Alembic यानी बायोकॉन, और दूसरा कौन सा था? Alembic नहीं पता कौन सा। बायोकॉन नहीं लिखते, चलो। ओके, तो ये तो इजी है यार। कोई और समथिंग So एल्स। NCC. एचसीसी? NCC. कौन से ये सब स्क्रिप्ट्स है, कहाँ से, कौन से? इज इट अ निफ्टी स्क्रिप्ट? एफएनओ ये? So I don't know about FLO, but yeah. ठीक है, ओके। मार्क द जोन्स, देयर आर गुड जोन्स, मुझे मिल गया है। मार्क द जोन्स। So प्राइसेस बताओ। 27.5, 27.5. 28 सर, 28 के आसपास है। 27.5। नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट। 24.5। एनीथिंग एल्स? 24.5 24.5। 24.5 24.5। नेक्स्ट, कम ऑन, हरी अप। ये साइड में लूँ क्या? हाँ चलो, हाँ बताओ। अभी अच्छा, प्राइस सर नहीं वो दिख दिख रहा गया, प्राइस दिख गया। है हाँ, अब ना, बस करे इतने, चलो ठीक।
Let's see what we have. क्या बात है भाई, ये classic, best. Both of them were perfect. Next. What we have next? Next script. Any यार टाटा कुछ भी मोटर्स टाटा मोटर्स बकवास. Worst script of Nifty 50. Investors hate this script. वाई सर अरे see this script, just see the trend of this script, ठीक है? I'll just open a weekly chart. कहीं भी बाइंग आई है क्या सालों में होल्ड करने के लिए? एक भी बार बता दो. नहीं. At least considering after 2016 or 2016 ही, can this script can go from 100 to 500 even in 5 years? If Tata Motors, if Tata dies ना, ये 40 चला जा सकता है. देख लो. तो ये स्क्रिप्ट बहुत मतलब इसको निकालने की बातें हो रही थी, बट टाटा को रिस्पेक्ट करने के लिए रखी तक निफ्टी में. व्हेन ही विल पास अवे निकाल देंगे निफ्टी से. तो ओके, वी कैन कंसीडर दिस. 1 आवर पे कुछ नहीं है गाइस. नेक्स्ट स्क्रिप्ट. चोला फिन. चोला फाइनेंस. हाँ. निफ्टी नहीं है, निफ्टी 50 में ही नहीं देख नहीं रहा फाइन. हूँ. चोला फिन अलग. अच्छा यही है क्या चोला फिन? हाँ. चोला फाइनेंस. मंडलम. सो टेल मी क्या क्या है इसमें. around 155 150 154 or something. हाँ. 154 155. 140, 142 or 3, 142. 142. Next. Is Sir, 154 plus 162 something. 162 something. Okay. Cool. Okay. Let's plot. 62. अरे okay, sorry. Okay. So okay. Nice. ये कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की नीड. लुक गाइस, आई वोंट कंसीडर 1 वाली लेवल. ठीक है, क्योंकि उतनी एक्टिविटी नहीं हुई है. इट कैन बी कंसिडर्ड. वहां पे एक्टिविटी ऑब्वियसली आएगी बट जितनी ये मिडलाइन वाली स्ट्रांग है ना उतनी नहीं. मिडलाइन वाली देखो ना यार कितनी स्ट्रांग है. Yes, sir. मिडलाइन है, रेक है, ये है रेक रिजेक्शन, ये 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 ये. So yes, and even 160 142 वाली लेवल को थोड़ा सा एडजस्टमेंट की नीड है. वी हैव टू कवर द विक्स गाइस. तो विक्स हाँ, बट ऑब्वियसली यहाँ प्राइस इतनी क्लियरली दिखती नहीं. ठीक है. ओके, लास्ट स्क्रिप्ट कोई गेस करो. चलो मैंने स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर कल के लिए. ओके Bajaj Finance. नहीं, आज अभी लास्ट है मेरा चांस. ठीक है. सो Okay. वी विल बी सिलेक्ट द ओनली स्क्रिप्ट आई ट्रेड इनटू of the either bank nifty and nifty. What we have for nifty. Okay, so चलो बताओ. मैं इसका 2 आज खोल रहा हूँ कि हाँ, अब बताओ क्या लेवल्स हो सकती है बैंक निफ्टी में. आई होप एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इंटरमीडिएट में. Yes, sir. तो बताओ क्या क्या है. 2600 के अराउंड.
20,600 around. 20,600 के अराउंड. नेक्स्ट Around 18,900 or 800. नेक्स्ट 18,800, yeah. हाँ वही आसपास. नेक्स्ट बस इतने. और मार्केट प्राइस के आसपास वहाँ पे भी नहीं. आवाज नहीं आ रहा. हाँ, विक रिजेक्शन है. ठीक है, ठीक है. आवाज तो बता. क्या ये तो बता. प्राइस नहीं सर, वो गलत है. वो विक रिजेक्शन है सर. बस वहाँ पे वो टर्न मार रहा था. 21,000. breaking the climax. So have yes, the नीचे वाले बहुत प्रॉपर है, बहुत ज्यादा प्रॉपर है. ये मेरा भी रहेगा कभी ना कभी रखा हुआ. तो yes, it makes a lot of sense this one. And ये जो ऊपर वाला है, yes, this also makes sense. Yes. Then what we have ऊपर के साइड में माइनर है. ये बहुत सारा माइनर है. Can we take this also, guys? You can consider this. Can we? As a minor level the adjustment. Can we? Yes, we can. It's a minor. Okay. Clear? Yes sir. Yes. तो हाँ, तो आंसरिंग कि हाँ, तुम लोगों ने जो भी दोनों गेस किए थे, yes, these were right. 1 hour में जाती तो और काफी ज्यादा एंड प्रॉपरली परफॉर्म. सर जैसे 2 आवर में कोई जोन सेलेक्ट किया है, तो अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, तो वो वही जोन पे 15 मिनट या 5 मिनट पे ट्रेड कर सकते हैं. हाँ, सो हम कैसे करना है वो करना है विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. Okay. अभी सिर्फ जोन को कंसंट्रेट करते हैं. ओके. 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 सो लास्ट फाइनल द बाप ऑफ एवरीथिंग, द निफ्टी. वाह, मैंने जो लेवल ऊपर पर रिस्पेक्ट किया. मैंने आज नहीं बनाया, बहुत सालों पहले. आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग ट्रेडिंग व्यू फॉर ट्रिप्स. एनीवेज, सो चलो ठीक है, बताओ इसमें क्या है. एक तो मैंने बना दिए. ठीक है, इसकी भी बना दिए. अराउंड 8,800. 8,000. 800. परफेक्ट. नेक्स्ट. माइनर भी बोल सकते हो. 9,600. ये भी एक है. हाँ वही. वही ना. अरे वाह. नेक्स्ट इज 9,400 के अराउंड. ओके. हाँ, ये जो डबल टॉप ठीक है. ये भी क्लासिक है. ठीक है. दूसरा. हाँ. यस यस यस. 1 आवर में होता तो और प्रॉपर्ली. 1 आवर में इसकी एडजस्टमेंट जो मैंने बनाई थी करोगे तो देखो, ये हो गया. फिर ये नीचे वाला तुम लोगों ने बोला है. ये वाला भी किसी ने बोला शायद से. ये वाला भी है, ये वाला भी, ये वाला. सो ओके, समझ गया है तुमको. तो मैं तो समझ गए यहाँ तक. कोई डाउट्स है फाइनल बिफोर एंडिंग अप? एनी डाउट्स? नो सर. No, sir. दूसरे लोग. राज, वर यू इंटरएक्टिव? राज, तुम्हारा आवाज ही मेरे को सुनाई नहीं दिया. राज, हेलो. चौपी. ओके. राज, आर यू देयर? Raj, sorry, Jay, sorry. Jay, are you there? Yeah. समझ गया सब? Did you answer anything today? Yeah. You No, did, I right? was observing. I actually kind of know this strategy. अच्छा, you know this thing, right? Yeah. Yeah, cool.
But are you any doubts or something clear, like the things you had? Up until now, I was plotting these zones in 30 minutes. So I'll start doing it in 1.5 hour. I was plotting Okay, these so zones you in used to 30 see in minutes. 30 minutes. Yeah. So you used to see in 30 minutes. Okay, fine. So I'll be telling you Yeah. filtering ki do it 1 hour, you will find it more good. Okay. I'll start doing it in 1 hour. Yeah. And ठीक है, I hope Tanmay clear. Yes, sir. Guru, Yes, sir. Ashish, Yes, sir. Chirag, Yep, clear. okay, सर okay. ये हाँ हाँ चीज Chirag, मतलब Chirag. किसी और टाइम फ्रेम पे क्यों मतलब 1 hour 2 hour पे क्यों देख रहे हैं 15 मिनट पे क्यों नहीं देख रहे हैं 15 मिनट्स में कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा नॉइज होता है. 15 मिनट्स में तुम इंट्राडे जोन्स बना सकते हो. ठीक है, जोन्स बना सकते हो. देख फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी का देखे फॉर टुमारो फॉर एग्जांपल, तो व्हाट वी कैन ड्रॉ फॉर टुमारो, जो मैं पर्सनली कल के लिए ड्रॉ करूंगा. ठीक है, वो एक होगा ये. ठीक है, सर बट ये इतने स्ट्रांग नहीं होंगे. मुझे यहाँ पे कैंडल स्टिक सेटअप्स बहुत देखने पड़ेंगे अच्छे से. ठीक है, एंड दूसरा होगा बस एक ही है, और दूसरा तो एक है ऊपर वाला. ये नीचे का है बट ये बहुत नीचे है, फिर इतना नीचे गिरेगा तो देखते हैं. तो सी, ये 3 बन सकते हैं. ठीक है, सो ऑब्वियसली अभी ये तो आज एक ही पहला दिन है यार, कितना सीखोगे एक ही दिन में. तो वी विल बी कवरिंग अदर थिंग्स ऑल्सो, कैसे क्या करना है एग्जैक्टली. I will be sending you all the PDFs, 200 plus research charts which I have created myself. I'll be sending it to you. बहुत सारी चीजें clear होगी. It will really help your analysis. But there is one homework for everybody. Find 1 hour, pay Nifty 50 and Nifty 100. Nifty 100 के सारे scripts you have to find. ठीक है? And select 6 to 7 best stock picks for tomorrow, which is near the CMP, and mark the uh, these zones and then send it on the group. ठीक है, ओके सर So from आज which? अब Nifty 100. निफ्टी 100 मतलब उसमें निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50. Okay. तो वो सब आईटीसी, टाटा मोटर्स, आईटीसी तो इग्नोर करो. जो एनटीपीसी वो सब जो भी होते हैं छोटे छोटे, यस बैंक जैसे. ठीक है, जो भी बहुत बहुत ज्यादा सस्ते हैं वो भी इग्नोर करना है, बहुत महंगे हैं वो भी इग्नोर करना है. Okay. ठीक है, तो जहाँ पे Yes, सबसे sir. ज्यादा वॉल्यूम होता है, फाइनेंस, एक्सिस, मेजरली सारे बैंक्स देखो. वो तो पहला है. So can पहले we create zones on zero tha? Like या वी कैन, okay. Okay, sir. या वी कैन, obviously why not. ठीक है, तो find it Nifty 50, Nifty 100, 6 to 7 stocks send me, and then I'll be seeing that and tell you if it is right or wrong. And also मेरा ये recorded है पूरा. I'll be sending it on, I will create a telegram group for us, जिसमें हम वो सारा मैं upload करूंगा for our ease. जिसे भी नहीं समझ है, जैसे गुरु वापस 6 to 7 स्टॉक्स का जोन्स नियर बाय, मतलब ऐसा कि स्टॉक जिसका लेटेस्ट करंट मार्केट प्राइस जो है वो जोन के पास है, ऐसा वाला ना. हाँ हाँ हाँ, मेक सेंस. मतलब इमीडिएटली नेक्स्ट डे ट्रेडेबल हो सकता है ऐसे. कल के लिए we have to see, but we are not gonna Yeah. trade tomorrow. Okay, we are just gonna observe. You Yeah. guys, हाँ क्लियर करनी थी. You, everybody is going to be under the observation how you guys are really reacting. कैसे तुम्हारे लाइव ट्रेड्स एग्जांपल, इसलिए ये सब हुआ वाला है, इसलिए मुझे भी कहना आसान हो रहा है. देखो यहाँ पे रिट्रेस्ट आया, देखो यहाँ पे ये आया, क्योंकि अभी ये हो चुका है, इसलिए मुझे कहना आसान है. बट लाइव मार्केट में इट्स रियली टफर. ठीक है, इट्स वेरी डिफरेंट. सो यू गाइज विल बी एटलीस्ट इन 2 weeks ऑफ मिनिमम ऑब्जर्वेशन कि कितने लाइव ट्रेड्स यू आर डूइंग इट गुड, कितने ज्यादा यू विल डू गुड. मेरे तरफ से वॉलंटरी सिग्नल जब आएगा, तो आई विल बी लाइक कि तुम मुझे पूरा सुनोगे. जब मेरे सिग्नल के बेसिस पे ट्रेड्स लोगे तो आई विल बी हैप्पियर. इफ यू गाइज थिंक कि हाँ यू कैन ट्रेड्स, यू कैन प्लेस ट्रेड्स एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, गो अहेड. बट इफ यू गाइज वांट सम लिटिल हेल्प एंड एडवाइस, देन मेरे सिग्नल का वेट करना, पेशेंस रखते हैं, पूरा सब कॉन्सेप्ट समझते हैं, स्ट्रक्चर भी समझना. अभी तक तो मार्केट स्ट्रक्चर समझना बचा है, वो भी समझना है. तो काफी चीजें और अंदर है जो करनी है, वो सब करके ही तुम्हें 2 weeks का अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा. अगर उसमें बेटर परफॉर्म करोगे, देन यू विल बी सिग्नल ग्रीन एंड यू कैन टेक ट्रेड्स. तब तक प्योर लाइव ट्रेड एंड लाइव प्रैक्टिस, दैट्स इट. ओके. ओके, डन. सो आई होप आई एक्सप्लेन ऑल द चार्ट्स टुडे इटसेल्फ. थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, बट ठीक है, आज हमारा लेट हुआ. नेक्स्ट टाइम तन्मय प्लीज ट्राई टू मैनेज योर टाइम यार, कहीं ना कहीं Yes, sir. ट्राई टू मैनेज, ताकि हम सबके लिए ईज होगा रात में. इट इवन आई स्लीप बाय 12 o'clock.
So let's do it properly. So let's Yeah, manage sorry, time I and understand. अच्छा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, एक अच्छा टाइम वी विल सिलेक्ट एंड देन वी विल डू दैट, कि हम फिर लॉन्गर सेशंस ले सकते हैं, आज सिर्फ 2 ही घंटा हो पाएगा, कल अब हम 2.5 घंटा 3 घंटा भी ले सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम टू मी एट ऑल. Let's see, and please send me all the PDFs, all the photos in PDF format if you can, और ऐसी ही फोटोज भेजोगे तो बेटर, पीडीएफ में मुझे स्क्रॉल करने बेटर होगा एंड मेरे रजिस्टर में लिखने बेटर होगा कि तन मैंने ये भेजा है, तन मैंने पुरु ने ये किया है. इट वुड बी बेटर कि तुम अगर पीडीएफ फॉर्मेट में भेजो एंड आई विल सेंड यू फ्यू पीडीएफ. मैं धीरे धीरे भेजूंगा, मैं थोड़े पीडीएफ भेजता हूँ, वो पीडीएफ ध्यान से पढ़ो एंड समझो, ठीक है? Yep. Yes, sir. Okay, chalo, peace out, guys. Good night. All the best. Just as I said, give me 6 hours of your day time, and I'll make you a flawless trader. And you guys will yourself see the improvement, the level of improvement and revolutionization in your trading system. So stay positive always. Don't be fearless, to be honest, and trust yourself, trust your instincts, and trust the process after all. Okay? So Yeah. good day, guys. Have a good sleep. Good night, sir. Bye. Good Bye. night, Bye. sir. Bye. 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 Good night. Good night.